segment of the marathon workshop is all how I can put it. So the thing is, like, of course, we have covered everything. I mean, I don't need to revise anything. But having said that, there are certain expectations that I have from you guys. That first is, I want you guys to start practicing immediately. Okay, मतलब आज से ही चालू कर दो, आज से ही चालू कर दो या कल सुबह से उठ के चालू कर दो. देखो, the point is very simple here, right? Many of you are in corporate, I get it, but don't use corporate as an excuse to never do the work. Okay, get up early in the morning, एक घंटे पहले उठ जाओ and read con calls. Okay, so now that you know, okay, like how to track the business, do the entire things across sectors. पहला चीज ये कि like take up those sectors where you thoroughly understand, right? फुटवेयर हो, गारमेंट्स हो, खाने पीने का हो, एरोप्लेन हो, ट्रेन हो, मतलब जो आपको समझ में आता है, वेयर यू हैव बीन यूजिंग दोस प्रोडक्ट्स, राइट? बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, उसको पकड़ो और एवरी डे मेक इट अ हैबिट टू रीड कॉन कॉल्स. नाउ वंस यू स्टार्ट रीडिंग कॉन कॉल्स, यू विल अंडरस्टैंड कि लाइक सेक्टर में मेगा ट्रेंड कहाँ पे बन रहा है, कहाँ से दूर रहना है, कहाँ पे रहना है. एंड वी हैव गिवन यू ऑल द पैरामीटर्स, सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज, टर्न अराउंड कहाँ पे हो सकता है कि नहीं, केपेक्स हो गया, गाइडेंस हो गई, आरओवी कैसे देखना है, आरओवी का गाइडेंस देखना है, किस तरफ जा रहा है, एंड देन मैनेजमेंट कमेंट्री एंड मैनेजमेंट का वो कॉन कॉल में माहौल कैसा है. ठीक है, सो आई वांट यू गाइस टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, राइट? और एल्स लाइक और एल्स आप ये चीजें सब भूल ही जाओगे, है ना? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ऑफ कोर्स हमारा रिकॉर्डिंग रहेगा, यू कैन ऑलवेज लाइक गो बैक एंड सी द रिकॉर्डिंग, वेबसाइट में ही रहेगा. एंड इसके साथ साथ एक और चीज ये है कि लाइक ऑफ कोर्स, राइट, आप लोग तो देखो, हम लोग सब अपने ही है, फैमिली टाइप के ही है. सो कोई भी डाउट कुछ भी होता है तो यू कैन ऑलवेज डीएम मी और प्रेरणा विथ योर स्पेसिफिक डाउट्स. बट वही वाला पॉइंट है ना, ऐसा डाउट पूछो कि जवाब देने का मन करे, है ना? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा डाउट्स मुझे मिलता है कि लाइक सर कल्याण नहीं चल रहा. वो कमेंट बॉक्स खोल के रखो प्रेरणा, कमेंट बॉक्स खोल लो. सो अगर आपका लेट से फॉर एग्जांपल ऐसे डाउट्स पूछते हो कि सर कल्याण का स्टॉक चल नहीं रहा है फॉर अभी, मतलब इसका मैं क्या जवाब दूं, है ना? तो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस के बारे में डिस्कस करो, हमारे साथ डिस्कस करो. तो इससे क्या होगा ना, एक एक कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट भी बिल्ड होगा. एंड इसके आगे तो ऑफ कोर्स, अगर से फॉर एग्जांपल लोग पूछ रहे हैं कि ब्रोकर पोर्टल में पोर्टफोलियो, राइट? मिहिर, एक बात बोलूं, तुम अपने सेविंग्स अकाउंट का डिटेल्स भेज सकते हो, अपने और अपने वाइफ का. आई रियली वॉन्ट दिस काइंड ऑफ पीपल आउट, आई टेल यू वाई. ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना, ये लोग किसी को ट्रस्ट नहीं करता है, तो साला ये लोग आता क्यों है? अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, और एक बात बोलूं मिहिर, तुमको मेरा पैसे का, मुझे अगर ब्रोकर का पोर्टफोलियो से जानना है तो तुम आए क्यों हो यहाँ पे? मतलब you know why there are influencers out there who get mad, right, and who like stop making content. क्यों पता है? ऐसे गलत सवाल की वजह से. सो एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, आप ट्रस्ट नहीं करते हो ना, आपको लगता है मैं झूठ बोलता हूं, राइट? मेरा कोई स्टॉक नहीं है, एक भी पैसा नहीं है. मीर, यू आर राइट, मैं फ्रॉड हूं, मैं बोल भी दे रहा हूं, मैं फ्रॉड हूं. ठीक है, अब चले जाओ ग्रुप से, और मैं तुमको तुम्हारा 999 भी वापस कर दूंगा. तो पॉइंट इज, अगर ट्रस्ट करके आए हो, जो तुमको दिखा रहा है उसको देखो, सीखो, आगे बढ़ो. वरना क्या है ये सब? मैं प्रूफ देने बैठू अभी अभी डीमैट अकाउंट का बैंक, तुमको पासवर्ड भी दूं मैं, है ना? सो एनी विच वे. सो यही वाला पॉइंट है. सो देखो, कमिंग बैक टू दिस, ये हो गया पूरा वाला काम. अभी आपको पूरा इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट द क्यूएनए. ठीक है, क्यूएनए पे क्या होगा, वी विल टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्सन. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट? आई कांट, और प्रेरणा कांट टेक 3-4, वी कांट गो इनटू अ डिस्कशन. इट विल बी वेरी अनफेयर, बिकॉज कल का वो सेशन के बाद भी देयर वर पीपल हु वर डीएमिंग मी के लाइक, सर मैं तो कब का रिक्वेस्ट किया, उसके बाद तो मेरा नंबर आया ही नहीं. ठीक है, Yeah, there were actually like 70 people on that queue. But again, we had like, see, we were answering the queries for an hour to 90 minutes, right? But if yeah. each and every one of you, continue to ask four queries per person, then how can the other person ask? It's like on call only, like 2 questions, 1 question per person. या एंड क्या होता है ना, आप अगर एक और सवाल पूछ देते हो ना, तो उसका जवाब देना ही पड़ता है इन तरफ से. तो मेक इट अ रिस्पॉन्सिबल थिंग के लिए आप एक ही बार में सब कुछ बोल दो, and then of course we will respond to you and then move on to the next caller. Okay, so on that note, I think we can I'm going to mute the chat, okay? Because I think yeah. everyone can ask this one only. Okay, first one is Harshit. I've added you to the stage. Kindly unmute. Yeah, hi Harshit bhai, good evening. Hello. Yeah, hi Harshit. Good evening. Actually, the session is very, very informative. So
actually, first I discovered your channel. I discovered Prerna's channel. That too, I was watching India Mart's stock, India Mart. So I saw the result, and the sales were up, profit were up. Still, the stock crashed. So that is how I got to know you, and your work really helps make sense rather than those charts. So, but my question is, uh, like I'm still a student, and I want to start reading con calls and results. But how do I start? Like, first, as you said that, I have to take 20 stocks or 10 stocks like that. But still, how do I pick those stocks? Because I'm not from a specific industry or somewhat. So how I get to know that, okay, these stocks gave good result in this current session, say Q3. So, No. This is not how you think. You don't have to see ke like which stocks gave more returns, so you will read. You no, will no, read not what returns. makes sense to I'm you. saying good results, good growth. So, नहीं, वो नहीं है. सोचो आपको जो सेक्टर से आज प्यार है, उस सेक्टर में ग्रोथ ही नहीं है. ठीक है? You will okay, read that sector. जैसे पेंट्स फॉर एग्जांपल. Say you want to read okay, पेंट्स. पेंट्स में कोई ग्रोथ नहीं है. yeah, आप पढ़ने लग गया, ट्रैक करने लग गया. फ्यूचर में पेंट्स में कभी ना okay, कभी ग्रोथ कुछ तो आएगा. yeah, आप सबसे बड़ा पैसा बनाओगे तब. But okay, even if okay, you like don't, let's say for example, you start, you like a space, okay? Maybe you like Rajoshi told you like paints, you start. At least you know now why you wouldn't invest in paints, right? You start like yes, that. correct, You yeah, know what not to do. Or coming back to your question, let's say like you saw that PGL is doing really well. So first go read PGL ka PPT, read PGL ka con call. Then who's operating in the same sector as PGL? You read everybody. Now we have a good view of the sector. Now you know everybody who's doing what. That's how you yes, can yes, start. You have to see, you have to start with one sector, any sector it can be. But I'll tell you one thing, no, why we emphasize on like start with something that you like is because see you saw right how boring that Concalca document is. It's so black and white, yes, basic, right? And you have to see it's a very lonely work also because only you are there and that PPT and con call is there you have to do, right? yeah, So it is very easy for you to lose that interest quickly. But if you like something, what happens? It becomes a bit easier for you to understand because your interest is there. You like that product. You like that business, right? yes, See, That is what, what. yeah, what, yeah, what we are actually trying to say is very simple. Don't think of this as like some work you are doing. This is not something you do for a salary. Say, for example, आज paints कुछ कर नहीं रहे, but you still keep looking for paints because you're that hunter who's waiting to kill that tiger. Got it? yes, yes, हाँ, तो ऐसे करके सोचो. जहां पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, वहां पे तो आप पैसे डाल के पैसे बना रहे हो. Got it? correct. Execution है, momentum है and all that. But what about microfinance का space? What about paints का space? What about the Yeah, but luxury? like my doubt is more about I'm actually missing the current opportunity, the stocks that are going to How go many up con because calls of do a you good. read, bro? How many con calls do you read? Actually, I came to know about this con calls and all just by you. So like I've पहले started reading. 500 con call पढ़ो. वरना Okay. what opportunity are you missing? You don't even know how to find opportunity. समझ में आ रहा है मैं क्या आप बोल रहा हूँ? जितना कॉन कॉल पढ़ोगे उतना आपका अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगा ना. सामने आएगा, सामने you can see those Okay. opportunities. हाँ, पहले So reading more con calls and reading con call of the entire sector is very important rather than Yeah. some stocks or like. Now see Harshit, you're only tracking, only tracking paint sector. Let's say आप सिर्फ एक ही sector track कर रहे हो, and there is only 7 companies over there. So Yeah. if that paint sector is not doing well, there will be no opportunity. But imagine you track paints, you track FMCG. As you go and read, as you start reading, you keep tracking more and more companies. आपका surface area जो है luck का, it will increase ना. Correct. दोनों करना पड़ेगा. एक तो आपको एक कंपनी को और वही कंपनी को समझने के लिए उसका पीयर्स को भी समझना पड़ेगा. ठीक है? Yes. और Yes. सिर्फ एक सेक्टर में रहोगे तो वही कुएं का मेंढक बन के रह जाओगे. सो Okay. दूसरे कुएं में जाना है, लेकिन एक एक कुएं में जब जाओगे ना, एक मेंढक पकड़ो और फिर उसके पीयर्स Okay. पकड़ो. एक मेंढक एक Okay. पीयर्स. मतलब So after 16 collecting, Hmm. okay, collecting the good con calls, good results, then I have to segregate uh, which is the best from these, which con calls or results are not You don't like I can't segregate do con anything. I calls. can't even buy, can't even sell. See, you don't segregate things on results because आज जिसका result अच्छा है, कल उसका result खराब हो सकता है. Is what my point is. You read Okay. what you love reading. Simple. So there is a quote that says कि like you read until you fall in love with it. It Yeah, yeah. doesn't matter. Make it a habit of reading 200 pages of con call every day. I don't care what you read. Do 200 pages for 200 days. Then तुम मेरे पास आओ. You will come with hundreds of opportunities.
Okay. समझ में Got आया? it. Yeah. So you have to Yeah. start the process and then things will fall in place, bro. Don't worry. So only, but my last doubt is that I can, take any decision regarding doing anything, buying, selling, or holding only by the results and con calls. Rest, everything, price, this, that, other news are irrelevant. So only after this information, I can say कि like I see it works for me. ठीक है? I mean I have never looked okay. at a stock chart का pattern and all those head and shoulder candle light dinner वो सब कभी नहीं किया Yeah. मैंने. All that I'm saying कि like what makes sense to you I taught you. ठीक है? और मैंने Yes. जो भी आज बाजार में मेरा जो भी एक्सपीरियंस है जो इससे पहले मैं जब कॉर्पोरेट में काम करता था मैं उस टाइम पे भी जब मार्केट के बारे में इधर उधर करके देखता था मैंने ट्रेडिंग करके देखा लेकिन मुझे सेंस नहीं बना बट जो मैंने कल बोला कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सेंस बनता है तो टेक्निकल के साथ करो बट देन आई एम नॉट योर गाइड देयर दैट्स द पॉइंट Yeah. Okay. Okay, thanks. Thank you. Thank you so much. Yeah. Okay, so we have next question from Nayan, right? Yeah. Hi Nayan, good evening. You can unmute yourself. Hello. Hi Nayan. Yeah. Hi, Good hi. evening. Yeah. Good evening. Raj, just one concept which I find it, I still need some understanding is about valuation, right? Let's say, take the example of the pens, right? Where you arrived at, DOMS is the best, fastest growing, or the best in that sector. Now, at this rate, right, we have arrived at a P of 85, right, based on the calculation. So the calculation I have understood. Now, how do I understand whether it is the right or reasonable valuation to enter? Okay, so the reason why I'm saying is this information is available to all, right? Right. And everybody starts entering. And in a bull run, sometimes it gets overheated, right? The prices go up. So how do I know whether I'm entering at the right valuation? So first thing is most people still in the market today don't even understand the concept of growth. Okay. So what you're saying today is it's not a prevalent thing. This change in pace of growth, like the car speed, you understood, right? That part, right? Correct. Nobody in the market understands this concept. Got it? So how will they come to this P? They don't even know how to do this. Like if you go on Twitter or social media, you will not see anybody talking about the change in pace. Okay. They know growth. They know growth businesses make money, right? They think value investor is not growth investor. It's like if you are not growing, what is your value? You tell me zero, right? You will not make money in that stock. So there is no concept of value without growth. So what you're saying is it's not a market-wide thing. Now the thing is this: whether it's a bull market or whether it's a bear market, money will always chase high growth. Got it? So now then comes the subjective things, which I said, right? I did not add DOMs to my portfolio. Whatever I had in my position, I just held it. But after looking at the results, I did not add more at this valuation because it made me uncomfortable. But that making me uncomfortable is not a scientific thing. Okay? If it's over 60 PE, I won't buy. Less than 60 PE, I buy because it's a behavioral thing. Plus, there is another company. I'll give you an example of another company called EFC Limited. That company grew sales at 70%. They guided to grow, I think, sales double. I think they want to double sales in FY25 over 24. And if you look at their PAT, if you do a FY25 PAT estimate for EFC Limited, and if you take the today's market cap, the P comes out to be 30 or 35. So on that day, the incremental money went to EFC. Are you getting my point? Okay, got it. But then here is another question. I have some friends here who constantly fight with me and say, why didn't you sell more DOMs? Actually, I sold a little bit of DOMs to get into EFC because see, money is limited, right? If I have a good deal, I need to reward that deal, right? And let's say there are deals like DOMS or Aditya Vision or Bector or Ethos, but the business is good, but the deals are not great at this point. So I might just take something out and put it somewhere else. That's what I keep doing, keep churning here and there also. बीच में थोड़ा इधर उधर करके. But it's a very subjective thing, right? One of my friends sold entire DOMs. He is like स्टॉक 1200 से 3000 हो गया है, अभी वो 100 के पी में चला गया. ये कंपनी तो 25 का, उसके ऊपर कभी ग्रो ही नहीं करेगा. उसको कॉन कॉल पढ़ के ही फेल्ट दैट. नाउ डू यू फील द सेम थिंग लाइक हिम? Then you never buy it. When I feel it can grow at 25% for 2, 3, 4 years,
And you know what? I can build wealth here because I'm more of that kind of a category as well. You see my stocks as well: Kalyan, Aditya Vision, Bector, Ethos. All of those, the stocks don't run up like wild, crazy thing like on a day-to-day basis, but they make money because business is a very structural growth engine. But there are times when I couldn't add to a Bector, like I couldn't add Bector in the last 2-3 quarters. Why? Because they just don't have operating leverage. Got it? So my EPS in Vector is not growing when the market cap is growing, the stock price is going up. So incrementally going forward, the deal gets worse and worse and worse for me for a business which was also growing 18% back then and still growing 18% back today. Got it? Okay. Yeah. So that's the whole thing, and it's completely subjective. Matlab, this is all I can add here. Yeah, I think we'll learn with practice. So, Yeah, exactly the point. So the more you track, Yeah. Also, Nayan, another thing is, see, me and Rajoshi have a similar portfolio, but the only difference is in allocation. Like his top allocation is Kalyan Jewelers, mine is Skygold. Okay. And here and there, few businesses, 3 to 4 businesses we have and we don't have. Now, Domes was also in my portfolio. Okay. I bought it, once it was after IPO and they told they'll grow at 25%. Now it was a 60p at that time, growing at 25%. I think 55 or 50p, growing at 25%. Why did I buy it? Because it was growing, nobody else were growing. That was the logic. Okay. Now, do you see over here? It comes in a category where the growth is 25, it is good, high growth, but even the PE is high. Now, what happens when your growth is also high and PE is high in this case, right? Tomorrow, if there is a if there is a scene where the growth stalls, obviously over here that same high PE becomes enemy over here. That is always there. correct. Later, what happened after a period of time, I think when it 7 to 20% ka growth, I cut my allocation. Okay, I literally slashed the allocation by half. Once it reached a certain PE, I would say, not because it reached a certain PE, to be very honest with you, but I did cut the allocation when वो 25 से थोड़ा 20% का बना. All the guidance is intact. One of the reason was I found a better deal like at that time compared to Domes, which was, let's say, like at a 25-30% ka growth engine, but I found it at 20p because there I can get both my PE ka re-rating will happen and EPS ka re-rating will happen. With Domes, what happens? I have both PE and EPS, but PE ka re-rating at this point becomes a bit tougher, not it impossible. won't happen. Okay, see, any company can go from 20 to easily. Even 20 to 60, 40p can go to 80p easily. But the same 80p to go to 160p, the journey is not impossible, but it is tough. Huwa na Trent and Titan. Trent and Kalyan. Yeah, so for me at that time, the option was like, do I stay with Domes or not? One side, I wanted to play the entire journey because see, the management is still confident about doing 25%. On the other hand, I have a new opportunity also. So what did I do? I slashed at that time it was opportunity cost. I slashed Domes by half, and then I went to this. That is the two school of thought, right? She would say she slashed it because she has her reasons. I might say just because I saw ka Kalyan ka valuation ka PE re-rating over 100, 120, 130p. I saw Trent go up to 200, 250 ka PE. Okay. So my point is, if you keep on doing good, you might even get 300p. So that is why I don't cut. But there are two different school of thoughts, right? She might want to pay a lower P, but mera कहना है कि like if my train is running and everything is fine, I just don't look at valuations and sell if the growth engine is intact. But Prerna looks both at valuation as well as growth because she and I are different individuals. I hope this clarifies the things. All right. Thank you both. Yeah, Appreciate it. Thank you. Yeah, thanks, Nayan. Okay, next questions from Pradeep Nair. Pradeep, can you unmute? Yeah, hi. Yeah. Hi, Pradeep. Hi. First of all, thanks for your time. I think the content is very rich and find it Thanks, very bro. helpful. And I like your blunt approach also. I think that's needed for the audience. As I understand, every investor is faced with two dilemma. One is what to buy and when to sell, right? And when it comes to buying, I get the concept of the pace of sales growth and the management guidance to be my holy grail now going forward. So just correct me if my thought process is in the right direction. Okay. Now, when it comes to the universe, it is always seen that the leader of the pack has already, run the journey, and the kind of money that an investor can make is always in the stocks which you normally are not hearing too often within media. And that's where I think when you start reading and when you start listening to con calls, you start unearthing the actual,
diamond in the pack, right? True. So in that perspective, the small cap segment, does it become the right segment for me to start looking at finding the right opportunities or listening to con calls to start with? So my answer is very simple: is you don't have to segregate small and large cap and all that. You read, and like the company which is growing at the fastest pace in the segment, you put your money and grow with it. So I mean look at this. I mean, if you look at a business like say Trent Limited, right? I mean, Right. Trent Limited is a large cap growing 60%. So there are always anomalies in every caps, and there are so many small caps which doesn't even grow, right? Right. I mean, I spoke about businesses like Sheetal Cool, Thangamail. There's a company called Laopala. I mean, they don't even know how to expand. Okay, so whether you go there, you will waste your time. Like reading about those. I mean, you read, you track, but then the thing is, like they just don't grow, right? So my point is, like growth should be the currency here, right? Right. And any company, whether it's mid cap, small cap, large cap, I don't think any stock has not gone up thinking, oh, I'm a large cap, so I won't go up, right? Right. Most large caps don't go up because they don't have growth. Like if you look at, say, for example, businesses like Asian Paints, then HDFC Bank, Asian Paints minus 6%, HDFC Bank plus 6%, Pidilite 2%, ITC 8 to 9%, then you have Dabur 6%. See, all these numbers I'm saying, Nestle 2%, then HUL 4%. Now, how do you expect them to grow? Even if they were the smallest of small caps, at this place, they would have not done anything, is my point here. Got it. It's not that they are large caps, so they are not performing, but since they don't have growth. So today, HDFC Bank and Sheetal Cool products don't have much difference here. I know people will come and thrash me on social media if I ever say that. But for an investor, दोनों तो हमारे लिए एक ही है ना, फालतू. सही है. दोनों में हमें पैसा नहीं डालना है और दोनों हमें नहीं चाहिए. बट ऑल आई एम सेइंग इसके लिए वी कीप ट्रैक बिकॉज इनमें से भी कोई अच्छा बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड, राइट? बिकॉज यू नेवर नो. कल लेट से मैरी को लेट से ये पैराशूट बनाते बनाते सही में एक रॉकेट बना दिया और फिर पैराशूट का सेल्स 200% बढ़ने लग गया, राइट? तो फिर हम सब मैरी को खरीदेंगे. सो इसके लिए वी रीड जो मैं पहले एक जो बंदे से वही बोल रहा था, द फर्स्ट कॉलर इन दिस Q&A सेशन के लिए, ही वाज लुकिंग फॉर थिंग्स के लिए कहाँ ग्रोथ है मैं वो पढ़ूंगा. मैं बोलता हूँ आप जितना पढ़ोगे ना, क्योंकि ग्रोथ का जो ये चीज वो चेंज होता रहता है, राइट? तो अगर आप सिर्फ ग्रोथ के पीछे पढ़ने लगोगे तो जब तक आप उसका पढ़ाई खत्म करोगे उसका ग्रोथ खत्म. करेक्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे पेंट सेक्टर को मैं पिछले 7 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है? सो पॉइंट इज, एक चीज तो मुझे पता है, कभी भी पेंट सेक्टर में कुछ भी ग्रोथ आए ना, मैं तो पैसा बनाने वाला हूँ उसमें, बिकॉज एवरी क्वार्टर में रिलीजियसली उन सब 4-5 कंपनीज का रिजल्ट पढ़ता हूँ, कॉन कॉल पढ़ता हूँ. सो इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर ग्रोइंग और नॉट ग्रोइंग, आई हैव टू ट्रैक, ठीक है? और जहां जहां ग्रो कर रहा है मेरा पैसा वहां जा रहा है, और जहां जहां से ग्रोथ जा रहा है मेरा पैसा वहां से निकल रहा है. सो लास्ट ईयर को एट दिस पॉइंट, एटलीस्ट इस पॉइंट नहीं होगा शायद 1-2 महीने और पहले भी, आप देखोगे मेरे पोर्टफोलियो में अरमान फाइनेंशियल्स था, मेरे पोर्टफोलियो में इवन मेरे पोर्टफोलियो में सूर्योदय भी था, स्मॉल फाइनेंस. सो द पॉइंट इज, ये सब जो कंपनीज क्यों लिया था उस टाइम पे, माइक्रो फाइनेंस में डिसबर्सल ये वो, लेकिन क्या मैं फंसा? नहीं, बिकॉज जब अरमान का मैनेजमेंट ने गाइडेंस घटाया मैं निकल गया. दैट्स द होल स्टोरी हियर. Okay, and the connecting question was when to sell, and like you rightly mentioned that we have to track it quarter by quarter and see whether there is change in management guidance when it comes to growth. देखो allocation घटा दो. You would see I have this company ना Red Tape करके, I think which was on the 11th position on the portfolio, 11th या 13th whatever it is. So Q1 में क्या हुआ था ना, ये पूरा तो consumption का problem आ गया because of election and heat wave, है ना? Store footfalls कम हो गया था. So Red Tape सिर्फ 11% से ग्रो किया था, 11, ठीक है? जबकि Red Tape उससे पहले 29, 31, 32% से करता था. Now here is the thing, when you do 11 instead of let's say 30 के जगह में, मैंने उस टाइम पे क्या किया था, थोड़ा सा रेड टेप काटा था. Okay. See, the point is कि मुझे एक चीज पता था कि रेड टेप वापस तो करने वाला है, लेकिन also having said that I don't know वापसी करेगा कि नहीं, because I'm not running that business. Right. So मैं डालूंगा तो नहीं, got it? लेकिन मैं निकालूंगा कितना, वो और एक रीजन भी है, डिपेंड करता है कि अगर मेरे पास और कोई बेटर बेट है कि नहीं. लेट्स से कोई 50% का ग्रोथ का इंजन मुझे 20 के पी में मिल रहा है. Okay. Got it? लेकिन मैं काटा रेड टेप से, मैं कुछ काटा कहीं और गया, कुछ कैश लिया कहीं घूमने गया, वो अलग बात है. द पॉइंट इज, फिर क्या हुआ, रेड टेप मेरे पोर्टफोलियो में रहा लेकिन उसका बेट कम हो गया. Got it? So when a company starts doing bad, you don't always have to sell at one go. You can sell at one go. Let's say for example, जब बहुत ही खराब रिजल्ट आता है, जैसे पूना वाला का हुआ, डायरेक्ट लॉस दिखा दिया, ठीक है? मैंने लिया, टोटल बेच दिया. जब कोई डायरेक्टली लॉस दिखाता है या कोई मतलब होता है ना धमाका कुछ करता है नेगेटिवली,
ठीक है, पूरा बेचता हूं मैं। मेरे लिए धमाका क्या क्या है, इवन मेरे लिए आईटी रेट भी धमाका है, ठीक है। The red flags basically. रेड फ्लैग्स, भाई भागो, बिकॉज द पॉइंट इज अगर मैं धमाका करके भागा भी, अगर मैं दिखा कि चलो मैंने पैनिक कर लिया, थोड़ा ज्यादा बेच दिया, पहले पूरा बेच दिया, अगले 2 हफ्ते के बाद एक क्वार्टर का नंबर देखूंगा, फिर ऐड करने लगूंगा ना, मेरे एंशियस होने का जगह ही नहीं है। लेकिन दूसरे साइड में सोचो, जो कंपनी के लिए से पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घटा, एक क्वार्टर के बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा बेचो, लेकिन कुछ बेचो, Okay. 10% के एलोकेशन की जगह 8% लेके खेलो, 6 लेके खेलो। क्या होता है ना, इससे आपका एंजाइटी भी चला जाता है, True. है ना। लेकिन मतलब क्या, अब गेम में हो, लेकिन आपका साइजिंग थोड़ा कम हो गया, बिकॉज वो कंपनी ने अच्छा नहीं किया। अपना गाइडेंस कमाया। अब अगर आगे जाके वो अच्छा किया, हम्म, फिर आपने और ऐड किया, स्टॉक और ऐड बढ़ा। सो द पॉइंट इज, यू डोंट गेट आउट ऑफ द गेम ऑल्सो, बट Right. ऑल्सो यू पनिश इट। हम्म, और लोग मुझे हमेशा ये पूछते हैं कि पूरा काटू, पूरा क्यों हमेशा काटना है, Correct. क्वार्टर काटो, एंड यू हैव टू जस्ट डू दिस थिंग, एंड इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, राइट। मतलब कोई वैल्यूएशन की वजह से, जैसे प्रेरणा ने डोम्स बेच दिया, पूरा बेच दिया, इज नॉट रॉन्ग। इवन मैंने भी डोम्स में ऐड नहीं किया, लेकिन मैं बेच भी नहीं रहा हूं, आई एम ऑल्सो नॉट रॉन्ग, हम्म, क्योंकि बेचने का रीजन थोड़ी है। आप बताओ, कौन कॉल पढ़ के खुद देखो, correct. है ना। So you अगर mentioned about Ace Construction. So it's by chance that I had it, and the fact that I've ridden the upside here, and now that it has gone up 10 times, and now that Prerna was saying that it has started showing the guidance towards from 35 to 15. So maybe this is the right time to prune down my allocation and just hold on and see whether coming quarters again they prune down further. Is the approach right? Yeah. Pradeep, I'll give you another similar example, okay? Similar to ACE, okay? So I still do, I have this Tina Rubber and infrastructure, okay? I bought it, I bought it through this same checklist. Sales, they came, they increased the guidance, they told they will triple the sales in a Right. span of 3 years, okay? They told, capex karega, they will increase the capacity by 4x and all. So all the checklist items they did. And plus the advantage was what? It was a 25% growth engine. I got at 20p. I got P rating and high growth, which means what? High growth and low PE business. So I will get what? Both P rating I got, I will get EPS also. Correct. The management kept performing, right? No problem. 2 quarters, 3 quarters back, they came, unka operating leverage started missing because of this Red Sea crisis ka logistic issue. Okay. Okay. Now, obviously, what happens sometimes when this operating leverage is when you've been a kind of a business, when you kept performing with all the parameters like tick, 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 every single thing, and see the market, whenever you start performing well, the market rewards you. How does it reward you? By providing you with a higher valuation. Right. Now the market is used to seeing in a particular way, margins is no longer there. See, business, nothing is structurally wrong. They are growing still at 25%. They have not revised the guidance. They're continuing to do the capex, but operating leverage is missed because of this logistic issue. First quarter, I did cut. Second quarter, I didn't cut. Third quarter, Q2, I cut it. I slashed by 50%. You know why? Because I got another opportunity over here on the side. The point is, प्रेरणा भी ये बताओ कि when did you make the most money in Tina Rubber का See, stock? and here also I made the most money when the P got expanded from from where, when it was at 22 P to almost 60 70 P. I actually, the first buying price of that was लेकिन जब 400. से ऑपरेटिंग लेवरेज चला When this गया, तब से operating leverage missed, I stopped making money. In fact, Okay. the stock started falling. Now, see over here also, right? It is a very subjective decision over here. There was nothing wrong with the business, and that is why even I kept holding on to that business now. But there came a point. It is like I waited for 1 quarter. I waited for second quarter. Second quarter bhi nahi mila. Then I cut the allocation. Now I still do. Why? I still have 50%. Why? Because business ka guidance is correct, direction wise it is doing proper, but bottom Right. line is not there. So tomorrow, in case if this logistic issue is solved, and if I know that the bottom line is going to come back again, I will continue to make money on that 50% now. On that other hand, I don't want to take the tension because Tina was 14% allocation in my portfolio. Okay. I couldn't have taken right either way. So I had to cut it down. So now I'm in that position where it is like, okay, if it continues to be better, I make money also. At the same time, I don't have to lose my sleep. Because you have always been told that buy right and sit tight. That concept is good for academic purpose. But that never concept applied. is good for writing books. Correct. बिकॉज देखो, जनरल जनता को जो बुक्स लिखता है, उनको भी पता है कि मतलब खाने वाला क्या खाएगा, तो खिलाने वाला वही खिलाता है ना. No, and unfortunately, that's the way the financial world is also, going on. Yes. There's so much of, like you said, only these superficial perspectives which are taught to us, but
what you guys are teaching us is the real gem. So kudos to both of you. Thank you, and I'll Thank you continue to so much, Pradeep. follow चलो both of मिलते you हैं guys. आपसे. Thanks. Bye. Okay. Next question is from Mr. Jangam Lakshman. So hi, Mr. Jangam ji, can you unmute? Hi Rajarshi, hi Prerna. Hi. Good evening. I have learned so much from your videos by watching. Okay. Thank you. Uh, if company like Massan Food update fake sales, how to find that fraud companies? You have to track and see. Okay, going forward, the sales growth will come down. Then you sell and leave. Okay, Any company. See, if you are giving fraudulent sales number, let's say, that means what? If you give fraudulent sales growth number, but your expenses are cash, right? Like say giving salary and rent and everything. okay. So beyond the point, you don't have cash in the business, na? Mhm. So if you give fraudulent sales growth number, after a point, you can't grow that number. Then you won't be able to even balance a balance sheet. Okay, okay. So the only way how to know, but I'm not even saying like every company, let's say Asian Paints ka sales have come down. It doesn't mean Asian Paints have become a fraud company. But every fraud company starts with a falling sales growth. Clear? Yes. On which sector you are bullish? On All which sector? sectors. All sectors. See, you have to read everything. See, the point is again, opportunities come and opportunities go. I can only tell you the things that are working today. But tomorrow, let's say, for example, the sectors come back up. Let's say IT. IT is not doing very well today. But tomorrow, I tell you today, IT is bad. 3 months later, IT sector come back up, and let's say the entire jewelry sector go down because of Present. reasons you don't even know. At present, which Yeah, so people who talk about all these bullish and bearish nation sectors and all, I mean, they come to the media and give generic interviews, then that's fine because at the end of the day, you have to see where the opportunities are constantly changing. It's like a chess game, okay, okay. different pieces, right? And you have to act accordingly. What's your opinion? Iris company, IRIS. Do you have any idea? There is no concept of high risk. The only risk is ignorance. So even if you buy a company which is like a mid cap or a large cap or a micro cap, if you don't track it, you stand a chance to lose money. So ignorance is the only risk here. So people get their money stuck, they lose their capital, and once they lose their capital, they start to think like, okay, the stock is below my cost price, so I'll wait. So they keep on looking at the stock chart again and again and again and again, but they don't understand that on the other hand, I mean, the underlying business ka sales are coming down, margins are contracting, management has stopped giving con calls. Are you getting my point here? So Yes, the yes. risk is ignorance. But if you're not ignorant, you see these problems coming back up, like the previous caller which we had a discussion, right? Start cutting position. What is risk there? You might take a bet today, and let's say, for example, today I can take a bet on, let's say, any company. Let's say recently the bet was Kaka Industries that I took. So I took a bet today. Let's say in the next quarter, Kaka Industries comes out with a terrible set of numbers and losses. What is my risk? I take some losses and get out the next day. Are you getting my point? But say, for example, if I don't track Kaka result and everything, then in 3 quarters time, let's say if the company goes losses to more losses, I might lose all my capital. So that's the point. Thanks a lot. Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay, next questions from Jignesh. Jignesh ji, you can unmute. Jignesh, are you there, bro? Apo? I can't hear him. Prerna, can we move on to the next? Yeah. 1 second. Akash Chaudhary, I have added him to the stage. I don't think he accepted it. I've added Harshit Kumar also. Yeah, Harshit, can you ask? Yeah, Harshit, hi. Good evening. Can you please unmute? Yeah, hello. Yeah, Thank you, both of you. thanks. And last 1 year I was following you. So my question is, like, in every day we are this current quarter, like they have started posting the results. Okay, so right nowadays they are posting 10 or 12, but maybe after a few days they will start posting. All the companies will start posting the result. So during that time, maybe I, according during reading, some companies are posting growth. Okay, so is it not possible to read all the con call in one day?
So how we can means we need to look which con call we need to read or everything we need to read. See, I understand your question. So the thing is, like, there are opportunities so many places in the world, right? There are opportunities in the Chinese stock market. Can you read Chinese Mhm. stocks? US No, market. no, no. Correct. Okay. So the more you read, the more opportunities you get, right? So that's the thing, right? Okay. But for a human being, try to read as much as possible. So then what happens is like I call this the luck surface area. So my luck surface area goes up. So at least kya hota hai na, I'll tell you the thing here. When you read more and when you have more opportunities, you know that there will be some companies in your portfolio that is going to do very bad. So you will be confident like, okay, isko kaat ke I know where I will go. But the Okay. less you read, the more you have to be a supporter of a stock. And that is where Okay. the problem lies. Because you don't know where to go ना. So inherently you have to support that company. कि ये तो अच्छा ही Okay. करेगा. Okay. लेकिन अब Correct. जितना Correct. अच्छा पढ़ोगे, आपको पता है, जैसे आज भी मेरा ये जो पोर्टफोलियो है, look at the name numbers. I have 27 names. जबकि the last 7 names have around 7-8%. So ये जो 7 नंबर है, ये भी तो अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है. बीच का जो 10-11 names है, वो भी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है. So let's say कल अगर मेरे one of the top 5, because my portfolio is very top heavy, as I said ना, top 6-7 names are like almost 40-45% of the portfolio. So let's say कल मेरा कोई top heavy portfolio stock का performance बहुत खराब हुआ, I can stash, take the money out, and make merry and put that money in so many other places, Okay. Okay. right? Oh, So that's it. yeah. One question. So like companies, okay, companies are posting bad result. So do we need to read their con call or we don't need to read at the particular time means during that day? Read. Because I'll tell you this, bad में ही तो good है. Because say for example, again I'll give you this Kaka Industries के example. 9% का sales growth का number लाता है, ठीक है? But I wouldn't have invested in the stock if I hadn't read the con call. In the con call, they said the 9% इसीलिए हुआ because the plant that we moved to, उसमें electricity का problem था. Now the problem will be resolved in the coming 1 month. And then we are still confident of growing 30% for the entire year, even though we grew 9% in H1. So that means H2 में, just do this calculation, 9 plus X by 2 is equal to 30. पूरे साल का बता रहे. That means they are saying they can grow 50% in H2. Correct. So I bought Kaka Industries. Yeah. Okay. Thank you for that. Yeah, thanks. Okay, our next question. Akash. Yes, Akash, are you there? Akash Chaudhary. Oh, Akash, I think is gone. So, Jignesh, can you try to unmute? yeah, Jignesh, are you there? नहीं हो रहा है. I think we can add back Jignesh later. Okay. Akash, Akash, are you there, bro? Just unmute. I don't think he's there. हेलो Is there? Okay. Hi, Akash. इशू में मैं मैक वो अनम्यूट का मैंने हटा दिया था इसलिए मेरा भी हो ही नहीं रहा था इतना देर से थैंक यू Okay, फॉर द cool. सेशन मेरे को 2 चीज पूछना है मैं फट से पूछ लूंगा एक पहला चीज कभी कभी क्या होता है ना कि कंपनी केपेक्स कर देती है ठीक है एंड उसका डेप्रिसिएशन लेते जाती है जिससे मार्जिन घट जाता है हाँ. तो उस केस को कैसे हैंडल करें फर्स्ट एंड सेकंड थिंग कभी कभी क्या होता है कंपनी प्रॉमिस अच्छा करती है लेट्स से एक कंपनी है एमरल्ड फाइनेंस आई थिंक आपने कभी रिव्यू भी किया था तो वो बोल रही है कि अच्छा वो परफॉर्म कर रही है उनका ग्रोथ भी अच्छा है सब कुछ अच्छा बहुत है अच्छा है. बट मैं उसमें इन्वेस्ट भी किया हूँ अब वो लोग क्या कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि 100 पार्टनरशिप्स करेंगे करेक्ट. बट उन्होंने अभी रिड्यूस करके 60 था पार्टनरशिप वो अर्ली वेज एक्सेस अर्ली वेज एक्सेस बट उनका अर्ली वेज एक्सेस का प्रोपोर्शन शेयर अभी 2% ही है 2% ही है मेरे को इसलिए बट वही गेम है. हाँ वही गेम है मेरे को अच्छा इसलिए लगा क्योंकि एक्चुअली मैं भी कंपनी से अर्ली वेज बहुत बार लिया हूँ ठीक है तो मेरे को प्रोडक्ट समझ आता है इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया चलो. हाँ. तो अब दूसरा मतलब चीज ये है कि वो बोल रहे हैं 100 करेंगे बट उन्होंने 60 किया एंड उन्होंने बोला कि इतना डिसबर्सल करेंगे वो ऑन ट्रैक है एंड एट द सेम टाइम दे आर सेइंग कि अभी 60 है इससे 250 कर देंगे नेक्स्ट ईयर ठीक है. तो वो लोग ओवर प्रॉमिस करके इस केस में अंडर डिलीवर कर रहे हैं बट ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिट में अच्छा डिलीवर कर रहे हैं तो इस दोनों केस को मतलब सिंस स्मॉल कंपनी है तो कभी-कभी लीवाई दे सकते हैं क्या देखो पहला चीज ये है एक मैं MCX का एग्जांपल दे देता हूँ कि MCX ने जब TCS को पूरा काम दिया था सॉफ्टवेयर को पूरा डेवलप करने उनका ठीक है तो MCX का इतना मार्जिन घट गया था कि वो लॉस में चला गया था ओके
राइट तो बात वही पे आता है, ये पूरा सब्जेक्टिव पॉइंट है कि उस टाइम पे अगर तुम एमसीएक्स में डालते, देखो एमसीएक्स केम बैक इन 3 to 4 क्वार्टर्स, और अगर तुम ये क्वार्टर में देखोगे एमसीएक्स का ब्लॉकबस्टर सेट ऑफ नंबर्स है इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ, पूरा लॉस से पूरा प्रॉफिट में आया, मार्जिन्स वेंट अप, मतलब हिस्टोरिकली भी इतना मार्जिन्स नहीं था एमसीएक्स का, वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो ये कमोडिटीज का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, विद 99% के आसपास कुछ मार्केट शेयर, मोनोपोली है, यस करेक्ट, जिसका जो मोनोपोली है। नाउ हियर इज द थिंग, राइट, इफ यू हैड इन्वेस्टेड उस टाइम पे, राइट, इट वुड हैव बीन लक, राइट, कि लाइक यू नो कि तुम्हारा जल्दी हो जाएगा तो तुम जल्दी पैसे बना लेते, करेक्ट। Yep. लेकिन देयर आर सो मेनी कंपनीज, राइट, जो केपेक्स करता है और वो अगले 5 साल तक उस केपेक्स से कुछ दिखता नहीं है। सो अल्टीमेटली बात घूम फिर के वही आता है कि अगर मेरा कोई कंपनी का लेट से ग्रोथ रेट कम है आज, ठीक है, और वो केपेक्स कर रहा है, मैं उसमें अगर पैसा भी डालूं तो कम एलोकेट करूं कि उसको ट्रैक करूंगा। हाँ, मैं भी वही करता हूँ, कुछ नहीं समझ आता तो वन पीस लेके रख लेता हूँ। Exactly. And another example I can give you, Akash, which is there in our portfolio is Yatharth, right? उसने 3 acquisition किया इस साल में, that उसका PAT जो है, PAT तो घटा ना, मतलब सिर्फ 10% से हो गया, lost on operating leverage because depreciation cost बढ़ा। Now see, I am happy right now that they did a capex, but there is also no guarantee के लिए कि hospital में patient आएगा उसके वजह से ये लोग revenue करेगा ना। There is also 50% probability ये जो capex which we are so well rejoicing कि like आगे जाके ये capex शायद you know it will not be fruitful. How will I get to know tomorrow कि like ये अभी जो 25% का sales growth कर रहा है आगे जाके वो नहीं करेगा। Okay. Pace of sales growth कम करेगा, I'll have to sell it at the end of the day. That is how I would say you can deal with it more or less. Another example I'll give you is Bharat Wire and Rope. Okay, 2019 में उन्होंने ये बड़ा सा capex किया था, ठीक है, अपना वायर और रोप के लिए, because they saw demand was really good and everything. Okay, उसके वजह से उनका भी वही बॉटम लाइन का चक्कर था। बट क्या हुआ, इन 2020 कोविड हैपेंड, पूरा डिमांड उल्टा फुल्टा हो गया, कंपनी वेंट इनटू डेट, कंपनी वेंट इनटू लॉस, दे हैड टू लाइक गेट बैंक्स टू बेल देम आउट एंड एवरीथिंग। क्या बेचा था उन्होंने, कुछ बेचा था ना अपना? No, that was Usha Martin, that they sold steel का business. Both the situations over here, MCX तो अच्छा किया versus Bharat Wire अच्छा नहीं किया। Ultimately कहाँ पे आता है ये? It depends on you कि like how much are you comfortable at the end of the day when you don't see the bottom line, आपका margin compression हो रहा है इसके वजह से, how much allocation are you comfortable? देखो बात यही पे आता है ना कि लाइक देखो आज ये जो प्रेरणा बता रही है, बीच में कोविड आ गया, तो कल भी तुम्हारे कोई कंपनी में केपेक्स तो बहुत कर रहा होगा, बीच में कुछ आ गया, फिर सब गड़बड़ हो सकता है ना। तो इसीलिए तो मैं बताता हूँ कि लाइक यहाँ पे जो पहला जो सवाल पूछा ना, बाई राइट एंड सिट टाइट, नाउ यू नो व्हाट नॉनसेंस दैट इज, राइट। अल्टीमेटली तुमको अगर वो सिचुएशन बदल जाता है तो तुमको स्टॉक से निकलना है जितना जल्दी, वरना वो स्टॉक तुम्हारा वो पैसा खा लेगा। Got it. ठीक है, सो वही ना, वही आज वो अर्ली वेज एक्सेस, ये जो कंपनी है जो तुमने अभी जो फाइनेंशियल का जो नाम बोला, उसको भी मैं बहुत अच्छे से ट्रैक किए जा रहा हूँ, अभी तक लिया नहीं है उसको, ठीक है। ये अर्ली वेज एक्सेस 2-3% है, इसलिए शायद मैंने अभी तक नहीं लिया, ठीक है। लेकिन तुम देख रहे हो रेट कॉर्पोरेट्स को ऐड कर रहा है ना? मेरे को वो चीज अच्छा लगा, बट वो एक चीज लगा मेरे को कि 100 बोल के 60 किया, बट एट द सेम टाइम नेक्स्ट ईयर का बहुत ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक टारगेट दिया, बट एट द सेम बुरा भी नहीं, तुम देख रहे हो रेट, उनका कहना है कि अगर कंपनीज का एचआर आलसी बनना बंद करे, इनको थोड़ा मदद करे तो कंपनीज का एचआर मतलब बिकॉज देखो कंपनी के एचआर को ये पैसे को अलग करना पड़ेगा ना। जिस दिन कंपनी को बंदे को सैलरी देना है उस दिन एचआर का काम बढ़ जाएगा। तो एक और जगह मैंने देखा था, उन्होंने बोला था कुछ, कहीं तो बोला था, मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक से, कि एचआर आलसी है बट उसको भी फिक्स करने के लिए हम लोग ऑटोमेट कर रहे हैं प्रोसेस। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है ना कि एचआर का जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उसके साथ इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ। और ये तो अब देखो, ये तो माइक्रोसॉफ्ट लेवल का कंपनी है नहीं कि सब इसका यूज कर रहा है, एज केसेस भी इनकॉर्पोरेट किया वगैरह। सो द गेम इज, बट एक चीज तो तुम देख रहे हो, बिजनेस डायरेक्शनली सही जा रहा है। बीच में कभी गाड़ी का पेस घटेगा, कभी गाड़ी का पेस बढ़ेगा, तो तुम अपने एलोकेशन को बढ़ाना घटाना उस तरीके से। लेकिन अगर खेल सही डायरेक्शन में जा रहा है तो पोर्टफोलियो में रहो, मतलब पोर्टफोलियो में इसको रखो। समझ में आ रहा है? कभी तुम 10% लेके खेलोगे, कभी 6% लेके खेलोगे, कभी 4%। लेकिन यहाँ पे पता है एक चीज क्या सर्टेनिटी है, अगर वो कचरा करता गया आगे जाके तुम्हारा घट के पोर्टफोलियो में 0 हो जाएगा वो। हाँ, पहले मैं नहीं करता था, अब कर रहा हूँ। हाँ, यही मेन गेम है एक्चुअली। वरना क्या है ना, तुम्हारा जो एलोकेशन है, तुम्हारा स्टॉक इतना गिरेगा, उस तरीके से 0% एलोकेशन नहीं करना है। मैं तो जब भी प्रॉफिट निकालता हूँ तो लॉस भी बुक कर लेता हूँ। करेक्ट, एकदम। मैं तो बोलता हूं, मैं अगर कोई भी, मतलब मेरा तो ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रहा हूं कि लाइक कि ऐसा बहुत कम हुआ है कि मैं प्रॉफिट देख के बेचा,
लेकिन कितने ऐसे स्टॉक्स है जो मैंने लिया, ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने लिया, अरे कंपनी ने ये बोला, वो बोला, ये बोला, एक क्वार्टर के अंदर देखा, एक रिजल्ट आता है, मैं देख रहा हूँ ये क्या किया, तब तक स्टॉक 15% डाउन है मेरा बाई प्राइस से, बेच के निकलो। अब क्या है, अब पहले मेरे घर वाले बोलते थे ये तूने क्या कर लिया, 70,000 डाला, 55 निकाला, मैंने बोला अब क्या करूं मैं, वो 55 को बचाना है, अब वो 55 35 हो जाए, अब चाहते हो? नहीं नहीं हो चुका मेरे साथ बहुत बार। I'll tell बहुत you, बार। अरे ये 6 10,000 के बाद ये मेरा 20,000 फर्स्ट पूरा प्रॉफिटेबल ईयर ऐसे है। ऐसे लॉसेस लेना सीखना चाहिए, बिकॉज क्या होता है ना, जब एक सही चीज होता है ना, फिर तुम देखोगे वहां पे तुम 20 लाख कमा लिया। तो मेरा वही वाला पॉइंट है, अगर तुमको लाखों में जीतना है तो कुछ हजारों का नुकसान लेना सीखो। लेना पड़ेगा, दैट इज कॉस्ट। अभी तो मेरा मतलब कोई भी मतलब अगर किसी में मुझे 20,000 40,000 का नुकसान, अब तो कुछ लगता ही नहीं है, लेकिन वही वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा एक्सपीरियंस से भी आता है, ये बात भी सही है। मतलब एज अ बिगिनर उसको 500 रुपए भी नहीं गंवाना है। मतलब आई नो दिस गर्ल जो जिसने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को 90-95 के रेंज में लिया था, लेकिन क्या है ना, बेचारी ने उसको ट्रैक नहीं करना आता है, फिर उसका क्रेडिट क्वालिटी खराब हो गया बैंक का, ठीक है, द पैट फेल 75% और वो स्टॉक 60 में आ गया। तो शी वाज लाइक आई एम सिटिंग ऑन अ 35% लॉस। मुझे लगा था भाई बड़ा नुकसान हो गया, फिर समझ में आया कुछ 5,000 रुपए का लॉस हो रहा है। ओके बट शी इज 21 ईयर ओल्ड, यू कैन ब्लेम हर, राइट? उसके लिए वो 5,000 का लॉस इज लाइक महीने का पॉकेट मनी में भी, आई डोंट नो, बेटर टू टेक लॉस इन द स्टार्ट, बट ठीक है। करेक्ट, हाँ, लॉस लो, बिकॉज क्या होगा ना, फिर वो सीखेगी कि ये क्या है। अब उसका टेंशन क्या होता है ना, दिस प्लेज विथ योर माइंड ना, बिकॉज क्या होगा मैं बता रहा हूँ, शायद वो उसको बेचेगी, आई डोंट नो, आई एम नॉट इन डायरेक्ट टच विथ हर, शायद वो उसको बेचेगी और अगले क्वार्टर में वैद्यनाथन जी आके बोलेगा क्रेडिट कॉस्ट मैक्सिमाइज हो गया, अभी तो यहां से हमारा सीन्स बेटर होने वाला है। अब वो बेचेगी, वो स्टॉक होगा 100, तो अगले बार जब वो ये सिचुएशन में फंसेगी वो नहीं बेचेगी। हाँ यही, वो बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो मार्केट कराता रहेगा, तब 6 साल पार हो जाएगा, देन विल गेट दी। अगले बार जिसमें वो ज्यादा पैसा लेके फंसेगी उस वाला कंपनी इंप्रूव ही नहीं करेगा। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है तो मेरे को 7 साल हो गया, ये लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट प्रॉफिटेबल ईयर हुआ आफ्टर सो मेनी मिस्टेक्स। अब ये कंपाउंड होगा। मेरा एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कंपटीटर्स के बारे में, लेट्स से XYZ है, बैंक है, तो बैंक का हम लोग को सब पता है, राइट? बट बहुत सारे सेक्टर्स में होते हैं, वी ऑल्सो नो कि छोटा बेस या स्मॉल कैप्स कंपनी या छोटे कंपनीज जनरली उनका बेस छोटा तो परफॉर्म ज्यादा फास्ट कर सकते हैं, दे हैव दैट लेवरेज। बड़े कंपनी में भी कर सकते हैं बट थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। तो कंपटीटर्स का लिस्ट कहां से लेके आए? जैसे कंपटीटर्स का देखो, कंपटीटर्स का लिस्ट जैसे फॉर एग्जांपल पिकाडिली एग्रो, ठीक है, वो 2 साल पहले दारू बनाना चालू किया, वो एक शुगर कंपनी है, ठीक है, लेकिन आज यूनाइटेड स्पिरिट्स सालों से है, राइट? मैंने कल क्या दिखाया, पिकाडिली एग्रो का वॉल्यूम ग्रोथ में वो इंद्री का वॉल्यूम ग्रोथ इज 400%, यस, लेकिन यहाँ पे पूरा यूनाइटेड स्पिरिट्स का वॉल्यूम ग्रोथ इज लो सिंगल डिजिट। यस, देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा बेस क्या है, मुझे फर्क पड़ता है ग्रोथ से। अब तुम खुद ही जाके पिकाडिली एग्रो का स्टॉक देखो, यू विल गेट द पॉइंट। हाँ मैं देखा हूँ, एमरल्ड फाइनेंस तो वही कर रहा है। अब देखो द पॉइंट इज दिस, एमरल्ड फाइनेंस का पेस ऑफ ग्रोथ देखो, कौन सा एनबीएफसी एमएसएमई ऐसे रेट से ग्रो कर रहा है, तुम बताओ। मेरे को बस एक ही वो समझ आता है, बजाज फाइनेंस ने नो कॉस्ट ईएमआई इंडिया में लाया था, ये अर्ली वेज लेके आ रहा है, मैं उसी, हाँ, लेकिन वो कहानी में बहक भी नहीं जाना है। हाँ बस वही ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रैक करके ग्रो करो। इफ यू आर वेरी लकी 10 साल से पैसा डालते रहोगे और 10 साल बाद तुम्हारे ऊपर सब किताब लिखेगा। हाँ अरे हाँ, बिकॉज सब कुछ चीजें होता है इन हाइंडसाइट। I mean, देखो the whole point comes down to this, like you know, हमें बियॉन्ड द पॉइंट किसी को नहीं पता है कौन से कंपनी में क्या होने वाला है। एग्जैक्टली। और बट हमारे ईगो यहाँ पे हमें बोल देता है कि ये स्टॉक तो बनाएगा, वो नहीं करना है हमें, एकदम मतलब फ्लेक्सिबल रहना है। और जहां पे हम देखेंगे कि एक मौका जा रहा है, मतलब सोचो तुम्हारे एमरल्ड फाइनेंस जब तक करेगा तो पोर्टफोलियो में एलोकेशन बढ़ेगा, स्टॉक भी बढ़ेगा, प्लस तुम भी और पैसे डालोगे, तो दोनों तरफ से अटैक होगा यहाँ पे, तो तुम्हारा एलोकेशन बढ़ेगा। बट देयर विल बी टाइम्स इन द मिडिल पार्ट ऑफ द जर्नी, जैसे मेरे अभी जर्नी में, अब मुझे पता भी नहीं है कि जर्नी खत्म भी हो गया या मतलब वो बहुत बड़े जर्नी का ये इंटरिम लाल पीरियड है, जैसे वेक्टर के साथ मेरा पता भी नहीं है कि मेरा, कुछ लोग आके बोलता है तेरा वेक्टर तो खत्म, और कुछ लोग आके बोलता है कि लाइक नहीं वेक्टर तो ब्रिटानिया बनेगा। ये बीच में ऑपरेटिंग लेवरेज कुछ दिनों के लिए नहीं मिलता, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अभी एटलीस्ट मैं पैसा ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं निकाल भी नहीं हूँ। तो इफ आई एम नॉट एडिंग इंक्रीमेंटल कैश, ऑटोमेटिकली उसका एलोकेशन कम हो जाता है। एक टाइम पे वेक्टर और एथोस मेरा टॉप 3 में था, ओके,
लेकिन फिर क्या हुआ, कल्याण आ गया वहां पे 40 मरने लग गया, तो कल्याण ऊपर चला गया और फिर उसके बाद आदित्य विशन भी ऊपर आ गया. सो द पॉइंट इज, यहाँ पे बात यही है कि हमें नहीं पता है खुद कि आगे जाके डोम्स पता नहीं क्या बनेगा. जैसे ये जो आपका जो एमरल्ड फाइनेंस है, ठीक है, अब आप लॉजिक बताओ, यहाँ पे हमें हड़बड़ी भी नहीं करना है. अगर एमरल्ड फाइनेंस 10 साल तक खेलता है, मतलब अगर आपको लगता है कि वो बजाज फाइनेंस जैसा बनेगा, तो मैं इस स्टॉक में 1 साल बाद से भी चालू करके मैं भी 9 साल लगाऊंगा, आप आज से लगा के 10 साल लगा रहे हो, दोनों पैसे बनाएंगे, दोनों पैसा बनाएंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. थोड़ा ज्यादा बनाओगे, लेकिन क्या फर्क हाँ वही ना, है ना. तो हमें इस तरीके से देखना चाहिए एक छोटे कंपनी, लेकिन उसमें हंगर होनी चाहिए. अंगर होनी चाहिए. हाँ, हंगर नहीं है, वही अपने एरिया में, जैसे निको पार्क करके कंपनी है, जैसे हाँ, वंडरलैंड हाँ. का छोटा भाई है कलकत्ता का, ठीक है. मैं कलकत्ता से ही हूँ. अरे पता भाई, तो फिर निको पार्क कभी बड़ा हुआ है नहीं, वो एक ही पार्क है, उसमें एक ही पार्क है. घर और एक ही वो सब बकवास, ठीक है. लेकिन तुम वंडरला को एटलीस्ट देख रहे हो, कोशिश तो कर रहे हो. भुवनेश्वर में भी एक प्लांट खोला, चेन्नई में अभी उनका 5th वाला अम्यूजमेंट प्लांट खोलेगा. वंडरला हॉलीडेज है वहां पे. निको पार्क में अंदर जाओगे तो पेड़ के नीचे बैठने का जगह नहीं. सो द पॉइंट इज, बट वो भी एक लिस्टेड स्टॉक है, और पता है कोविड के बाद उसका भी तो ग्रोथ आया ना, बिकॉज जीरो के साथ कंपेयर कर रहा था. हाँ, जीरो के संग कंपेयर हो रहा था. अब उसका फुटफॉल पूरा टॉप्ड आउट हो गया है, तो इट्स लाइक कैपेसिटी मैक्सिमाइज हो गया. अपने यहाँ डाली नहीं दो कैपेसिटी. मेरा कुछ दोस्त लोग भी है जो निको पार्क में 3-4 गुना किया पैसे. बाप रे. लेकिन बात वही है ना कि उसके बाद दे वोंट मेक मनी, बिकॉज एक्सपेंशन तो नहीं होगा. तुम जीरो के साथ कंपेयर करोगे एक फिस्कल में, लेकिन उसके बाद वाला फिस्कल में क्या करोगे, बस खत्म. लॉर्ड ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा, फिर वो हिलेगा नहीं. हाँ, मतलब फिर तुम्हें एक और पार्क खोलना पड़ेगा ना, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ तो देना पड़ेगा. तुम पार्क में किसी का टिकट प्राइसेस तो नहीं बढ़ा सकते हो ना रैंडमली, बिकॉज वंडरला टिकट प्राइसेस नहीं बढ़ा सकता है. वो बोलता है 4-6% से हम बढ़ा रहे हैं, और वंडरला में एकदम हाईटेक सारे बड़े बड़े सब चीजें हैं. बड़े बीच में चलो, आकाश, आई थिंक वी नीड टू लाइक मूव ऑन टू. थैंक यू सो मच. या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Just pause your video for 2 minutes. या गाइस, 1 सेकंड. Hello. Yeah, hi, Abhishek, are you there? Yes, sir. Yes, Abhishek, how are you? हाँ, बोलिए, अपना सवाल पूछिए. Yesterday we were speaking about the nominal GDP growth of the nation. So if there's a company whose sales growth is less or probably around the same rate, so you are not interested in such companies at all. Is that so? I mean, if the country is growing 13-14%, say, for example, including inflation, real GDP plus inflation, Right. and if I am coming to the stock market, taking so much risk in putting my money in one business, for example, Right. I mean, why would I want to go for businesses which are growing less than the whole nominal GDP growth of the country? So that's just a theory. So like if you look at cement companies which grow maybe 200-300 basis points more than the nominal GDP of a country, No, that I won't be interested in. you wouldn't be interested. So are there any other sectors which you would completely, not interested just because of this parameter? So that's what I'm saying. Like every sector, there can crop up some companies. Like let's say, for example, one sector where you feel nothing is happening, then an IPO comes and that new company grows at 50%. Okay. Right? You can have a new sector, for example, let's say EFC comes into the whole co-working space, right? We never knew what co-working sector was, right? So नया sector आ सकता है, जैसे facility management is another sector, नया sector आ गया. And even existing sector में there can be a new player that comes up and grows at an immense pace on a small base, like Piccadilly Agro in alcohol. Okay. I don't see any alcohol company growing 20-25%, to be very honest. There is one company called Allied Blenders करके, Allied Blenders and Distilleries, ABD. ठीक है? I believe that is one company that can still grow between 15-20ish. I don't think Radico can also do that, because Radico now इतना बड़ा base बन चुका है.
I mean, not United Spirits or United Breweries, I don't want to even talk about it. Okay. So the point is, when Piccadilly Agro comes, they come in with one single alcohol, right? Indri karke, and they start growing volumes at 400, 300%. So that is what I'm saying. Like, we cannot generalize it. Say, for example, you take steel. One small steel company in one particular region can start scaling up. You never know that. So, sir, another thing about business updates, like you have companies have to inform the exchange regarding when they would declare the result. Are there any such rules for business updates to be declared to the No, exchange? no. There is not even any rules to do con calls. Okay, so the point is, like, the better the disclosure, the better it is. But I'll tell you one thing: if the numbers are good, if there is high pace of growth, if there is operating leverage at the same time, the stock will make money, irrespective of whether you disclose or don't disclose. But there are no timings as to कोई भी कंपनी कभी भी आके बोल सकती है ये हमारा बिजनेस अपडेट है. आई मीन बिजनेस अपडेट सब तो मतलब क्वार्टरली रिजल्ट से पहले ही दोगे ना, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट के बाद वो अपडेट देके क्या फायदा है ना. सो लेट्स से द अर्निंग सीजन अभी Jan 15 से चालू होगा ना, जब सबका इनकम स्टेटमेंट आएगा एंड ऑल दैट Q3 का, तो बिजनेस अपडेट दोगे आप 1 और 15 के बीच में ही ना, बिटवीन जो क्वार्टर गया ऑफ सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का ना. Right. दैट्स इट. मतलब अब देखो द पॉइंट, अब पता है स्टॉक चलता है बिजनेस अपडेट पे. Right. That's why they become more important. Like या they बिकॉज have fast sales every month. द पॉइंट इज मार्केट जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है ना, इसको वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलता है. हमने जो मैथ्स में सीखा था कि एक नया इन्फॉर्मेशन आता है और पूरे एग्जिस्टिंग गेम बदल देता है. एग्जिस्टिंग गेम वो वैल्यूएशन का आता है, एंड दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब जो न्यू इवेंट इज दैट न्यू पीस ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कम्स, राइट. और वहां पे आप देखोगे अगर सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस घट गया या सेल्स ग्रोथ का पेस बढ़ गया, जो भी हो जाए, फिर आप देखोगे आपका स्टॉक उस तरीके से बिहेव करने लगेगा, एंड यू हैव टू एक्ट क्विकली बिकॉज द मार्केट वोंट गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम टू रिएक्ट आल्सो. Right. Okay, Yeah. thanks a lot. Great clarity of thought. Thank you, Abhishek, for joining today. Thanks. Okay, next, Venkata, are you there? Vamsi? Yeah, Venkata? hi. Hi, Hi, hi. Rajesh. Yeah. Am I audible? Yes, you are. Please ask your question. Okay. Firstly, thank you so much. Very rich content. And in Thank you. fact, many of the things watching both of your videos, I could already had a good sense of it. And now it is more like, say, completely elaborated. And all. Thank you so much. Yeah. So, and I also want to thank both of you. Like already made good money on learning many things from both of you. And so, just one thing before I go to my question, like you said, buy right and sit tight is not wrong. I think you have changed it to buy right and sit tight till the next quarter update or till your next trigger comes up. Yeah. True. Right. True. Right. True. And So between the quarters, I mean, can I just interject here? So let's say if there is no company ka update today, and the latest update is great, okay, in between whatever the stock does, I don't care. right. Then I will sit tight. Right. But if the update is deteriorating, the business update, I am not going to sit tight. Then I don't care if the stock is in green or blue or pink or red. Right, I right. Yeah. Till the next update. That's it. Correct. So the updates will decide how I build my position. Correct. Yeah, that's the thing. Right. Now, on the same context, on this same note, so if I was, so this stocks in this cab space, right? WTI cab, Wise Travel India, and Shri OFSM, like they had given decent sales growth numbers. Like one was 26, did not have an operating leverage in case of Wise Travel cabs. And the other one was 23 or something, but gave a 100% odd, right? Despite that, we saw in both these companies, there's like 50% or so price erosion, right? Do you think it is pure volatility or is there something more? See, here is the thing, right? Here is one thing I like to tell you, Vamshi. It's a very important point here. Our job is not to question what happened. Our job is to take opportunities. You are not, why are you looking at a 50% fall and all that and, completely ruining your thought process? If you find a company, let's say you find WTI cabs, which let's say can grow 30%. And let's say because of anything that happened in the past, whether it has gone up 2x or whether it has come down 4x, nobody cares. But if you're finding it at a good market cap and the PE is low, right? Who knows, maybe you can make a lot of money in the future on this stock. No, the reason I asked is I was holding WTI cap. Okay. And then we saw this result at 26%. So no operating leverage. You got no operating leverage, huh? That's one thing. Correct. Yeah, no operating leverage. So I thought maybe a little bit of movement here and there.
but I didn't expect it to go down by 50-60%. Tell me one thing, do they do con calls? I don't think they did the con call. Na, No, they don't do con calls. They don't. Even I also wanted to know why did WTI cabs did not get operating, because the other two companies got operating leverage. Yeah, right. Right? I wanted that con call to know for that same reason, but they didn't do con call. Also, another thing is, see Venkat, when you have two companies in that space that are also growing and getting operating leverage, and you're not getting an operating leverage, it puts a question. Now, market will obviously No, react. that's right. That's right. Prerna, on that same point, I was thinking it in that case only WTI cap should have fallen. But even the Shrio FSM has also fallen by a similar move. Again, I'm saying this again and again. Like, let me give you a context here, okay? So I'll tell you, like, right? I have V2 retail in that portfolio. Right. So there was a period of time when the stock fell from 1450 to 980. Right? Right. You can see that chart. It just fell to 980, just Right. kept falling. But no reason. And then again, it started going up to 17, 1800, whatever it is. See, the point is, like, the thing is, if you get perturbed by all these things, then you are putting your research into question. Okay. Then that means you're saying beyond the point, you will only listen to the market. Then why do you do research? Then the question comes is like, Hello. does the market know anything extra? Got it? Yeah. But here is the thing, right? This is the thing that you have to like take into consideration. You can't believe like, okay, the market knows something that you don't know when stocks are falling. And when stocks are going up, you're telling yourself, guys, can you just mute your Hello. audio? Am I audible? Yeah, Venkata, you're audible, but if you can mute it because there's disturbance from your side. Yeah, can you please mute, because I'll just make the point and then, yeah. So the point that I'm trying to say here is, when you do your research and buy a stock and the stock goes up, you feel you have done a great job. When you do your research and then after that you buy a stock and the stock goes down, let's say 20-30%, you think then the market knows something that you don't know. Or got it? So that means what? You're justifying a falling stock price and you will end up selling that stock. My point is, if you have done the hard work, if you have done the real thing, you hold on to your research. Or else, then though, of course, like you're always like the puppet of that market. If the stock goes down, you sell. If the stock goes up, you do something else, you celebrate, right? So I hope, Venkat, you're getting the point here. No, I understood. Just thought to take your view also on that. Okay. And the other point was with regard to position sizing, right? So is it like when you see a good opportunity, do you put around 1 to 2%? Is it something like that? And Yeah. Because now my portfolio is quite big. So right now, even if I want, I can't make a 20% position right away. But tell me one thing, in my initial days, I could have made a stock my portfolio ka top holding very easily. Right. है ना? I still remember मैं जब मार्केट में मतलब जब मैं जॉब करता था उस टाइम पे मेरा पोर्टफोलियो 6, 7, 8, 9 लाख का हुआ करता था. तो 9 लाख का अगर टॉप होल्डिंग 10% है तो मैं 1 लाख जुगाड़ करता टॉप होल्डिंग. Right now it's not that possible for me to do that. ये एक point है. But the other point which I would like to say is कि like I don't want to actually like do it also. Because say for example businesses like ये जो EFC Limited, WTI Cabs, फिर आपका ये जो नया सेक्टर का जो कंपनीज है, ठीक है, right? So I want to give these companies a chance and grow with them. Because I also don't know कि like आगे जाके क्या हो सकता है ना? और ये नया सेक्टर ऐसे WTI Cabs, I wouldn't want to rush into such things very quickly. But also I wouldn't also want to not consider it when let's say the business is growing north of 25%, isn't it? They're doing very well. They're actually doing well. So my point is, like now why the market is not rewarding? Why is the stock going down? These are not for us to analyze. If we get good bets, let's say we get a 25% ka good bet and the management says that they will grow sales at similar pace and margins will go up and the stock is available at say 20-30 ka PE, it's a good bet for me. And I told you, right, it doesn't matter whether you're selling paints or cement or garment or co-working. Everybody's here to make money. Correct. So I don't care what the hell are you working on, to be very honest. Right. You become a cab rental company or you sell cement. I need 30%. Give me that with operating leverage. I am more than happy with you. That's it. That's the whole point. Right. So on that, just adding one last point to that. So like in V2 retail, you said, right? I was holding V2 retail also at that same point. And as it fell down, I thought we can encash more on this volatility and I added a huge amount. So I just thought to check with you, do you think that's the right approach or you think it would not be a right approach? I will never invest in my money behind a stock fall. I never do that.
No, it is only price fall. The results we did not see No. something bad. So here is the thing, right? My funda is very simple, right? I mean, the point is, if the company does well, I reward it. Very simple. I don't wait for a 10% fall to buy. Also, if the stock randomly falls, right, I don't have to jump and buy all the time. Okay. Got it? Because then the focus is on buying cheap. The focus is not on understanding the scope. No, I didn't wait for it, but given that there was opportunity, Then you bought. Then why didn't you buy at 1400 also? That's a question also, right? Why did you buy it? Like, what made you buy it at 900? That didn't make you buy it at 1300. Because think about it, if the stock goes up 5x, 1300 में डालने वाला और 900 में डालने वाला दोनों बनाएगा पैसा. And if the stock falls to 600, 1300 में डालने वाला भी गवाएगा, 900 वाला में भी गवाएगा. So the thing is this, we try to save that 10, 15, 20%. It's just wastage of time. So when the stock is going down, let's say for example, I don't have to scram for capital. No. I know this is the mindset that people have given. My thing is कि like business update अच्छा आया, मैं अगले दिन उठा पैसा डाला. okay. Because whatever it, let's say my update comes के sales grow by 50%. तो जो मेरा stock price था, मेरा stock price तो 50% नहीं बढ़ा ना. तो मेरा जो भी हो, forward earnings पे मेरा अगले दिन में मेरा P तो कम हुआ ना. Right. तो मैंने उस पे ऐड कर दिया. अब उसके बाद अगर 2 दिन से 3 दिन से नीचे भी जा रहा है तो नीचे जाएगा, ठीक है, फाइन. हाँ, और अगर लेट से बाद में मेरे पास थोड़ा कैश आ जाता है और लेट से मुझे डिप्लॉय करना ही है, तो फिर मैं ये नहीं देखता उस दिन लाल में क्या है. उस दिन मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा ग्रोथ वाले कंपनी कौन सा है जिसमें मेरा एलोकेशन कम है. Okay. हाँ, Yeah. that's the thing. Yeah. Okay. See, like I am a salaried guy, right? So monthly cash flows आते हैं. Like to answer your question, why did you not put it 1400 versus it went down to 1100? शायद मतलब वही ना, मतलब मार्केट तो फॉल नहीं करेगा ऑन द फर्स्ट के वामशी का पैसा आएगा. Right. Yeah. But my point is very simple here. Whenever you No, want I to got your point. deploy in terms of which is the company which is growing at a very fast pace and it's available at a decent valuation, for example. Correct. Right? जैसे प्रेरणा का, प्रेरणा और मेरे में एक ही डिफरेंस है. प्रेरणा looks at प्रेरणा gives a little more preference to valuation. I give a little less preference to valuation. ठीक है. Okay, I am like that baseball bat wala. Matlab, if you are growing, I grow with you because I have seen stocks in my life. When they run, they grow 10x. Like you saw Trent ka valuation, right? But it kept on growing 50%. So the point was, you know, why am I so the whole B2 investment for me actually happened because I missed Trent. And you know why I missed Trent? Because Trent never did con calls. I thought you actually moved out of Trent to V2 retail when that like last quarter. If I had Trent or उस Trent नहीं. The thing was that, right, कि when V2 loss से profit में आया and in that quarter they started growing at the level of Trent. That was the first time I started telling people कि like you would see my videos also. I would tell people again P2P में this is a company growing at par with Trent. अभी profitable भी हो गया तो मैं Trent क्यों लूँ? Right. 300, 400, 500, 600 करके स्टॉक भागने लग गया. नाउ हियर वाज द गेम, राइट, कि उस दिन मुझे थोड़ी पता था कि V2 इतना अच्छा करेगा कि ट्रेंड को आउट परफॉर्म करेगा. बट माय डील विद ट्रेंड वाज दैट आई मिस दैट एंटायर रैली. मतलब एटलीस्ट 1000 से 5000 तक मैं तो उस स्टॉक को सिर्फ देखा. क्यों देखा पता है? कॉन कॉल नहीं करता. ये थोड़ी कोई एक्सक्यूज हुआ. आई थिंक ट्रेंड टॉट मी दैट वेरी वैल्यूएबल लेसन कि लाइक यू नो कॉन कॉल नहीं भी करता है तो भाड़ में गया. अगर कंपनी में ग्रोथ है तो स्टॉक पैसा बनाएगा. Right. Red tape is a good example. I made a lot of money in red tape also because of the Trent wala analogy. Right. But you didn't switch out of Yatharth to Max then on that same note. I see, again, having said that, See, here's the thing, Venkat. So Max was not a high growth engine. It was growing at 20%. Yatharth was growing at 40%, and Max Cup valuation was 8690p. You tell me 8690p growing at 26% versus 40% ka engine at 25p. Where will I get my EPS and PE rating? Which company will I get? Yatharth. Right. Now what happened this quarter? Now Max and Yatharth are growing at the same rate. Now pressure comes on Yatharth obviously because a market cap of 1 lakh and you are a market cap of kitna 5000 and you are not able to grow faster than that of Max. Obviously now you see the pressure coming on Yatharth. That is why abhi bhi stock nahi chal raha hai. And on top of that you lose operating leverage. Now Yatharth has to perform faster than Max every other quarter for us to put more money in it. Because see, अगले क्वार्टर में भी अगर यथार्थ का ग्रोथ रेट मैक्स के आसपास रहा, see Max is Titan.
Senco is Yatharth. Understand? Same shit. This time Senco grew at a slower pace than Titan and Yatharth grew at a slower pace than Max. इसीलिए अभी क्या होगा, मैक्स और टाइटन पे लोग, बिकॉज इन एनी विच वे पीपल ट्रस्ट दोस कंपनीज मोर, तो वहां पे ज्यादा पैसा आएगा, और यथार्थ और सेंको में क्यों डालेगा फिर धीरे धीरे करके. So See, go what is an advantage a small company will have against a giant? That the fact that your low valuation because they'll get P rating. Now tell me one thing: why would investors of Max leave Max and come to Yatharth? Because Yatharth has high growth. But why would anybody want to go to for that to happen? Yatharth should have a higher growth rate. Now that is the मतलब whatever she is saying is, अगर मैक्स से कोई यथार्थ में आएगा, because she wants, people would want a 40% इंजन from a 20% इंजन. लेकिन अगर कोई 20% इंजन में बैठा है और दूसरा जो छोटा कंपनी वो भी 20% से, तो मैक्स के साथ ही रहो, टाइटन के साथ ही रहो, तो फिर मैं सेंको और गडगिल में क्यों जाऊं? Same logic. Got it? Sure. Okay, thank you. Thank you so much. Nice talking to both of you. Okay, next question is from Ajay. Ajay, can you unmute, please? Yeah. Hi, Rajesh. Can you hear me now? Yes, Ajay, I can hear you. Yes, hi. So I just have one question. This is more from a conceptual point of view. Yesterday, we discussed a lot on operating leverage, right? We discussed operating leverage in relation to PAT. That is, if you are able to grow your PAT in a much faster pace than sales, then you have good operating leverage. So should we see operating leverage more in relation to EBITDA or operating profits, or PAT is the right metric? Because when you say PAT, you also have to consider costs. Right? I get your question, Ajay. Now here is the thing, right? There are certain companies जो आपको EBITDA के लेवल पे देखना है. There are certain companies जो आपको PAT लेवल पे भी आप देख सकते हो. So, for example, there is a company, let's say you take Blinkit. Blinkit का कोई PAT ही नहीं है. But at an EBITDA level, you can do that math because अभी वो loss से profit में आ रहा है. ठीक है? And then there are certain companies जो let's say profitable है, तो आपके PAT level पे देख सकते हो. There is one more way of looking at it, EPS के level से, because we are shareholders, right? Now let's say for example the company does QIP. So suddenly when you do QIP, even though your sales are going up, but since your number of shares are going up, denominator में तुम्हारा EPS उस rate से नहीं बढ़ा. Right. That's also another situation. So see, these are all situations, bro. Now what I do is like, ऐसे situation में कभी कभार मेरे holding companies get stuck. Stock नहीं, जैसे यथार्थ, good example ना, with the previous caller. Suddenly operating leverage चला गया, सिर्फ 10% से पैड ग्रो किया, लेकिन केपेक्स क्या बंद किया नहीं ना. So हमने क्या किया, सिर्फ ऐड नहीं किया. उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, मतलब हम यथार्थ का बाप नहीं है, लेकिन इस क्वार्टर के बाद वी डिडंट ऐड टू आवर पोजीशन. लेकिन अगर हम देखते कि यथार्थ इस बार भी 40 करता, ठीक है, 40% से ग्रो करता, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता और ऐड करता, तो शायद मेरे पोर्टफोलियो में आपको यथार्थ टॉप 4 में दिखता. So ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि whether it's EBITDA और PAT, just कि डिपेंड करता है. मैंने जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कल एक SD रिटेल करके कंपनी के बारे में बोला, वो EBITDA लॉस से प्रॉफिट में आ गया. तो देखो, आज अगर लेट्स से ये रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, ये जो बर्गर किंग वगैरह जो कंपनी जो लॉसेस में है, तो कभी कभार पैसा यहाँ भी बनता है EBITDA मार्जिन के ग्रोथ से, जबकि पैट है ही नहीं. समझ में आ रहा है? लेकिन एक बात तो है ट्रू कि आपका जो भी आप देख रहे हो, आप EBITDA देखो या पैट देखो, ठीक है, मतलब द पॉइंट इज के लाइक, अब वही आप, मतलब मैं वो सब नहीं बोलना चाहता हूँ कि लाइक अकाउंटिंग में कुछ इधर करेगा उधर करेगा एंड ऑल दैट, बट सी अल्टीमेटली मैं क्या चाहूंगा एज अ शेयर होल्डर कि मेरे बॉटम लाइन ठीक है ना. सो आई ट्रस्ट पैट एट अ पर्सनल लेवल मोर देन EBITDA. Got it. That's Understood. Perfect. Yeah. Thank you. One thing here. Yeah. I mean, we'll go to the next person here. So think about this, right? यहाँ पे पता है अकाउंटिंग में प्रॉब्लम क्या होता है, मैं बता रहा हूँ कंपनीज क्या करता है. सोचो मैंने क्या बोला ना, यहाँ पे सोचो, how do you know whether, say when you buy an asset, cash is going out, right? Also, when let's say for example, जब तुम किसी को सैलरी दे रहे हो, cash is also going out. Correct. So is your employee your asset? No, right? Asset is a computer. बट दोनों जगह में कैश तो निकल रहा है, बट एक है इनकम स्टेटमेंट का एक्सपेंस, दूसरा है तुम्हारा बैलेंस शीट में एसेट. गॉट इट? कैपेक्स. करेक्ट. लेकिन जब ये EBITDA कैलकुलेशन में ऐसे भी तो कंपनीज का अकाउंटेंट कर सकता है ना कि वो अपने कोई लॉन्ग टर्म एसेट को शॉर्ट टर्म करके एक्सपेंस में दिखा दिया.
और तुम्हारा EBITDA बदल गया, करेक्ट, और दूसरे साइड में तुम्हारा कोई शॉर्ट टर्म एसेट को तुमको लगा कि नहीं मैं तो इसको 15 महीने तक पैसा दूंगा, तो इसको तुमने लॉन्ग टर्म एसेट कर दिया, सो योर EBITDA नंबर गेट्स ब्लोटेड। और बट पता है ये सब हमें पता भी नहीं चलता है, ये सब बोलने के लिए आई कैन टेक अ लॉट ऑफ सेशंस, पैसा भी मिलेगा मुझे, लेकिन ये सबसे क्या होगा, अल्टीमेटली सेल्स ग्रोथ देखो, बिकॉज जो ये EBITDA का घपला कर रहा है ना, उसका आगे जाके ग्रोथ चला जाएगा, कभी ना कभी जाएगा ही। तुम घपला कितने साल करोगे, एक साल 2 साल के अंदर तुम्हारा भांडा फूस होगा, और तब हम भाई बोरिया बिस्तर लेके भागेंगे। बट यू कैन नॉट एस्टिमेट अ कंपनी डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस एंड प्रेडिक्ट इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। Yeah, so PAT is more like conclusive as compared to EBITDA, irrespective of what accounting. PAT level पे तुमको दिखता है कि कंपनी का क्या है, Correct, irrespective of what accounting treatment they wish to show or whatever. हाँ करेक्ट, हाँ, got it. बिकॉज एक और चीज है, बिकॉज इफ योर अकाउंटिंग तुम अगर बदलते हो ना, IND-AS का जो चेंजेस होता है, तुम देखोगे कुछ कंपनीज का पैट में एक बहुत बड़ा बूम मिलता है, बट दैट्स अ वन टाइम। एग्जैक्टली, यस, वन टाइमर, यस, वन टाइम देखोगे, फिर क्या होता है, उनको पुराने जो इनकम स्टेटमेंट है उनको भी बदलना पड़ता है टू कंपैरिजन के चक्कर में, तो ये सब थोड़ा सा देख लेना ब्रो, बस बाकी तो चलो। थैंक यू, ओके, थैंक्स अजय, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन राज का लेते हैं। राज, मैं भी राज, आप भी राज, तो राज के प्रसाद जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट? Raj, are you there? I think you can go नहीं, to I think Raj सिमरन के साथ चला गया। Okay, Anas है। Hi Anas, can you hear me? If you can unmute and ask your question. Hi Raj, hi Prana. Yeah, hi bro. Good evening. I joined today only. I missed yesterday's session, the recording. So it was a good session on the topic which you covered. So yeah, I'm just a beginner. I've just started last financial year. So my first question is regarding realized profits, right? So when do you, as a investor, think of getting the money back? So let's say you have invested, or do you think any percentage wise of taking the money back and then from the account, or just stay invested? So when what you is your open funda? so I'll tell you this, bro. So when you open a business, businesses are in a going concern phase. So nobody starts a business saying I'll stop it in 5 years. Business stops because of problems, right? Like you have to stop because you can't pay salary, you are not making money, your product has gone out of the market, right? So in a way, when anybody starts a business, they start on a going concern basis. So for an investor also, an investor only leaves the market after he loses a lot of money. So if you make money, it becomes more of a greed thing, it becomes a habit, then you want more, right? So that's how I can put it. The other way is like, I don't treat the stock market as a machine to make me money for retirement or every day. What I do is whenever I need money, I take money out of stocks. Simple. I don't care. See, the point is very simple here. Okay, most of my net worth is in stocks. Okay, I don't believe in any money outside stocks, because what will I do putting money in cash? Like, cash is useless, to be very honest. But say for example, I have to take my family out to, let's say, to Thailand, or let's say I have to go to Goa, right? I need money, I just take, then I don't look at all this growth and all that. Okay, I will never say, for example, I will never tell my old parents I am not taking you to Europe because Kalyan is growing 40%. So that's bullshit. Okay. So the point is, you need to see money in a different way. But if you're in the stock market, you would want your companies to keep growing and making more money for you. So there is no like one particular limit, but yeah, for your lifestyle needs and everything, you can take money out as much as you want. So that's fine. Yeah, got it. Yeah, so my question regarding today's analysis, right, on the cash flow, you mentioned that when trade receivable is high, and let's say sales growth is less, and expected sales growth is also high for the next quarter. So considering this, like, what do you think? Should we stay invested and add more, or No, I wouldn't add more when the sales growth is low right now. Got it? Unless and until the management says that yes, it will definitely happen. Got it? Then I can probably add to plan. It's like a bet, right? It's like the probability ka scenarios, hai na?
There is never one right answer. There are like 3, 4, 5, 6 scenarios, and there is always like a COVID kind of a scenario also, unknown, that comes and fucks up everything. So it's a game where it's a scenario based analysis. The more the number of scenarios in your head, and you just have to believe that like you put in your money thinking that those scenarios in your favor can play out. If it keeps playing out, you keep on putting more money and build your position. But if scenario changes, the least you can do is not add at that point. Got it. And follow-up question regarding market cap. Let's say A on the same sector, A is a big company and it has some high growth, whereas B is also a company which is slightly lower in the market cap, but has the same sort of growth which is seen in the group company A. Now, which company should we be investing? Should we be going to the leader? Like So again, small doesn't guarantee that it will do better in the future. That's also a point here. So today, Yatharth and Max Hospital, right? Yatharth's market cap is 5,000 crore. Max Hospital's market cap is 1 lakh crore. So Max Hospital is 20 times the size of Yatharth. Both are doing 26%. So I just can't put my more money in Yatharth today thinking we actually didn't add Yatharth, right? What we just spoke to that last caller. We actually, I think I took some money out also from Yatharth because it didn't get operating leverage as well. I actually think of Yatharth negatively here, rather than thinking Yatharth will go big because it is such small from Max. My point is, if you are so much smaller than Max, if you are 5% of Max in terms of market cap, why did you grow in terms of the same size as Max? Then I have more respect for Max. Okay. Like now I have more respect for Titan as it grew at a faster pace than Senco. Okay. Got it? Rather than thinking, oh, Senco and Titan both same growth, but Senco small, so Senco will be bigger. Who said that? Because there are so many smaller पहले भी jewelry. You guys would have seen this company called PC Jewelers and all that. वो तो बाद में बहुत सारे bank loan में default हो गया and all that shit happened in that company. But PC Jewelers, when it was growing also, people used to like say like again same story. Like they used to grow at a faster pace than Titan. ठीक है? But here is the thing, right? You want to grow at a faster pace than Titan, but you have to continue growing, na? You have to build that reputation over a period of time. And our job is like we don't know. Maybe Senco becomes a PC Jewelers. Maybe Gadgil becomes a PC Jewelers. We don't know that. But our job is to keep track, right? So as long as they're good, we stay. The moment we see problem, we get out. Okay. That's the thing here. Yeah. Okay, bro. Thanks a lot, bro. Thank you. Yeah. Prerna, can we take some more guys, just one question each, please. I can't because there are so many questions here. I can't take more than one question. I'm really sorry. I have to move on then. Okay, Shubham. Hi, Shubham. Good evening. Please throw your question. Hello, hi Raj. Hi, Shubham, bro. As earlier also, I joined the finance one also. Okay. Chalo, batao, Shubham bhai. So my question is in PN Gargi fashion. I don't have it. I don't track it. Just I found one example that that I want to ask. So in Q1 23 to Q2 23, its profit grew by 1.8 times, right? And in Q1 24, it grew over 4 times as of year on year, right? But in Q2 24, it dropped by half, but as compared to year on year, it is doubled. You understood? Prerna, can you take this question from Shubham? Yeah, so basically, if I'm getting it right, Shubham, on a Q2 on Q2 level, it increased, but Q1, when you compare on QOQ, the profits didn't grow, right? Yeah, Q1 to Q2, it fallen by half, but in previous year, Q1 to Q2, it didn't fall. Means it is not seasonal. Yeah. Okay. So here's the thing. In Q1, what had happened was, if you look at their model, earlier PNGS Gargi that is there, right? They're using No. Sorry. I would interrupt. Just it is not related to PN Gargi. I can read con call and figure out like what happened, and the stock has also not fallen. It is an all time high. I'm just asking with respect to if a company doesn't do con call, and I cannot have a source to figure out why it has fallen or whatever may be the reason. So how would I go about it? Because in Q1 to Q2 it has fallen by more than 50%, but last year same time it grew,
and but year on year it has grown. So I am confused, like, Okay, and the okay. company First, doesn't do con call. okay. Let me Yeah, speak. First of yeah. all, you need to understand the business model, right? Now, let's say these people don't do any con call, but you know that QOQ are not supposed to compare because of high seasonality. So whatever happens, also even it fell 50%, it wouldn't be my concern to a certain extent. Second point, if they don't do con call, you will have to take that day decision based on that. Now, let's say now on a year on year level, it fell. Okay. I'm giving you an example. Let's say Q2 on Q2 it fell and they didn't do con call. That day it's up to you. If let's say you have 10% allocation and the stocks tomorrow, let's say fall 50%, are you okay taking that kind of risk? Do you have the stomach to take that and wait until the next quarter and see what will happen? That is something you will have to do for yourself. It is a very subjective decision. Okay, okay. And adding to it, hi Raj. Yeah, Yeah, hi. question to you. Yeah, I also missed on Trent because मैं सोचा कि how will it grow on that large base, 50-60,000 crore market cap. So it has gone. So the question to you is, like you said, in Kalyan you wouldn't add at such P, but you will look at it, even though it is 40% growth engine, right? So my question is, suppose I am holding one company and it growth has like stagnated, okay, and now I have two options. One is like Kalyan at 100 110 P and 40% growth, and second one is, for example, it is a 20-22% growth engine at 35 P. So and I have to allocate at one. How should I go about it? Again, Shubham, it's Subject. very subjective, very Okay. very subjective. I mean, there is no one right answer to this, na. I mean, it Okay, depends. okay. First is like if that company that you're holding has stagnated sales or something. Now somebody might come and say like cut all the stock, cut entire position. Somebody might say wait for a few more quarters, देखो कि improve हो रहा है कि नहीं. Maybe the management is giving you flowery hopes, ठीक है, कि अगले क्वार्टर तक सब ठीक हो जाएगा एंड ऑल दैट, लेकिन सोचो ठीक हो नहीं रहा है, ठीक है, देन यू गेट स्टक इन दैट स्टॉक वर्सेस से फॉर एग्जांपल तुमने जब निकला वहां से, लेट्स से दैट दूसरे कंपनी में गया, ये भी तो हो सकता है कि दूसरे कंपनी से भी ग्रोथ जा सकती है अगले क्वार्टर में. सो I mean, it's just it's a random game at the end of the day, and we just have to like try to figure it out as much as possible. So that's the best I can give you an answer because there's no Understood. answer. Yeah. Just one thing more. You said in investment checklist whatever we have to do. Before concall they will release in announcement that concall is happening, and before that business update will be sent, right, in the form of PPT. No, not every company, but जिनको मन करता है. Yeah. So business update will be sent in the form of PPT. And what is press release and earning report? These It's are nothing but a separate things, or I am not aware. Just PPT का just summary है वो, और कुछ नहीं है. that is PPT only, right? PPT का summary है, just बता देते हैं सेल्स में क्या हुआ है, कितना दुकानें ऐड किया है, ये वो just 3-4 pointers. Okay. Thank you. Yeah, thanks Shubham. Yeah. Okay, our next question I'll take from Arindam. Hi Arindam, are you there? Bro, you can unmute yourself. Nishant, I think you can unmute. Wait, Arindam is there. Yeah, I think Arindam is there. Yeah, hi bro. Okay. Yeah, please ask. Hi, Rajesh Prerna. Thanks for all the content. Just a quick question. Say, for example, for new businesses like say Silico Gadgets, or say EFI, or say Bella Casa, these are the businesses which are in the very growth phase, and it's very difficult for you to get the trajectory in a quarter someday. So I'm just saying a hypothetical question. Is it fair? Because I go through Bella Casa, they're adding them now at a trend and all. Just on a quarter's miss, is it correct to kind of take a position cut, or we should go for a couple of quarters? That's what I'm saying. Bella Casa, to me, I have no reasons to cut my position, right? But I also can't put in big money because it's a very small company. So I build my position. That's what I actually said when I was talking about that portfolio, na? So small. So Rajesh, I'm coming from the perspective that they meet your criteria. You said very rightly that you need to convince me not to cut.
Correct. So the quarter results come, and I like that statement of you have to chase for my capital because I'm limited, right? Yes. Now these three companies which are in a very growth phase, and they all three disappoint you, and there could be different reasons, right? I mean, Celecor is a high growth engine, and given the demographics of their, tapping with Dixon and all, I think they seem to be, but they can disappoint. They are growing at 70-80%, and there could be some reason they grow at 30%, and they will maintain. So you can go. So my question is that you get the texture of their confidence in the call, etc. But you really take a call basis one quarters and then cut and move. No, I'll tell you this. There's this company called Vasa Denticity, dental cart platform. Okay. So the management guided for 70%, but could not deliver more than 40%. Okay. So then it got stuck. The stock got stuck. Nobody made money. Even the stock fell also, right? So here is the thing, right? I mean, the thing is, if you guide for something and you can't deliver that, I will cut my position. Simple as that. Understood. Okay. All right. So, but Yeah, again, Arindam, on the same context over here, let's say you have Celecor Gadgets now, and you know these people don't do con call, right? And they've been growing at 70%, let's say in Q1, Q2, and in Q3 they come and they're doing like, let's say, around 30%. And you don't know, right, whether this 30% is one quarter or if it's going to continue like that, for the upcoming quarters also, if the pace of growth is going to come down, right? Now, it's up to you at the end of the day what you want to do. Like I told you, it's a very subjective thing. Do you want to wait with that and just wait for another quarter and see, if things go well? Or do you want to, just cut right now and see, let's see how. Again, see, it comes, why am I telling subjective is because, now let's say if you don't cut, okay, you don't cut the position, and maybe it was a one-time thing. Again, no con call, you don't know why it happened, and things go better. You will feel all happy. At the same time, let's say again next quarter instead of 30% they do 20, or let's say again they do 30. The pace of growth is not high as it used to be earlier. You're gonna feel regret tomorrow when the stock price falls, right? Yes or no? You'll be like, "Arey yaar, I should have cut it last quarter only." So do you understand over here? It becomes very subjective. And you need to ask yourself, to anybody I'm telling this, you need to ask yourself when this situation arises. It's like a confusing situation, I would tell, an ambiguity where you do not know what to do, whether you should cut, whether you should. I will always still cut. Whenever you have a confusion, just let go. That is the best thing, because you don't want to die with anxiety. You shouldn't go to sleep with anxiety. You shouldn't look at your portfolio and be like, "Arey." Yeah. That is the main thing, because when in doubt, say no. There was a thing, where there is a kahavat. I say when in doubt, cut. Okay? So there is no way. And see, these are very small companies, all these Bella Casa and Celecor Gadgets, right? Even though you cut, and then let's say, for example, later you feel like you have cut a bit more, you still will have enough scope in the future to add. Okay, So, sure. yeah. So that's the thing here. Okay. Thank you. Thank you, Arindam. Yeah. Okay. Next question from Nishant. Nishant, you there, bro? Yes. Thanks, Prerna. Thanks, Raj, both of you for this wonderful session. Thanks. The one thing that I can take from this session is that always look for the growth. And second thing is, when you're stuck in a situation where two companies are producing the same sort of growth, and stick with the king, like Yatharth and Max example. Now, my doubt, something is in between these 2 points, and the point is, for example, I'm taking the example of Union Bank. Here, GNPA, NNPA is going down, ROA is improving, ROE is improving, EPS is improving, operating profit is improving, net profit is improving, gross profit per branch, gross profit per employee is improving. There are many parameters which are improving, but yet growth is mere 11%. And it's not limited to Union Bank example. There are All many PSU banks, same story. many stocks, not limited to even banks. Many stocks where growth is not there, but there are many parameters which gives you clear indication. But Yes, they are getting margin expansion. PSU banks got margin expansion in the last 2.5 years, right? right. If you look at the PNB GNPA, it was 12.5%. PNB Correct. GNPA in Correct. 2022 September quarter, that number is 4.6%. Correct. So here is the thing, right? But the PNB loan book never grew more than 12-13%. Correct. Correct. So my point is, it's the same as a business that cannot grow sales but expanding margins by, let's say, cutting cost or improving asset quality. My point is, like, yes, you can make money in that stock. You saw, right? Like in these PSU banks stocks went up. But after a point, now that the market knows, you tell me one thing, we have to look into the future, na? Correct. In the future, PNB's GNPA won't be 0%.
it'll stabilize at 3.5%, 4.5%. So Correct. going forward, you have to look at PNB's loan book ka growth. Uh-huh. Or else, how will your EPS keep growing only on asset quality improvement? Okay. So if you would have asked this question last year, same point to me, I would have said कि हाँ bro, still makes sense, पैसा बन सकता है. लेकिन अभी because उस time पे 12 से 8% हुआ था. I still remember last year this time. Correct. But अभी 4%, तो your margin of safety has already gone down. मतलब 4 से 1 थोड़ी होगा. अच्छा, यहाँ पर राज मैं एक और पैरामीटर ऐड कर दूं कि स्टॉक टॉप से 40% सिचुएशन है. One second, Raj, can you please mute your mic? Yeah, please go on, Nishant. I said कि ये पैरामीटर के साथ साथ मैं अगर एक पैरामीटर और ऐड करूं कि स्टॉक टॉप से 40% डाउन हो गया, ग्राउंड पे ये दिख रहा है. इस सिचुएशन पे एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या सोचना चाहिए? कुछ नहीं. क्या करना चाहिए? मतलब कंपनी अगर सही है तो यू हैव टू टेक द पेन. क्या करे बोलो? नहीं, गिरने का पेन नहीं है. माय पॉइंट इज कि पैरामीटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, स्टॉक प्राइस डाउन आ चुका है. देखो, अगर आप वैसे बोल रहे हो ना, अगर आप वैसे करके बोल रहे हो, क्योंकि देखो, अगर आप, आई डोंट नो, आर यू टॉकिंग अबाउट यूनियन बैंक का एग्जांपल हियर? कोई भी एग्जांपल, कोई भी, मतलब आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में मैं देख रहा हूं ऐसा ही हो रहा है. मैं बोल सकता हूं पीएसयू का वो खत्म हो गया, ठीक है, एंड यू नो द रीजन व्हाई. एग्रीड. मतलब पीएसयू में वो बड़ा पैसा और नहीं बनेगा, बिकॉज पीएनबी का 12% का जीएनपीए अब कब बनेगा? नहीं बनेगा, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं. आप यही गेम अच्छे से बंधन बैंक को ट्रैक करो, शायद उसमें ये खेल खेल सकते हो. अभी उसका 7% के आसपास 6.5-6% का जीएनपीए है. करेक्ट. लेकिन हाँ, उसको इंप्रूव करना है. वो तो खराब से और खराब होता है, तो उसका स्टॉक और गिरता है. करेक्ट. लेकिन अगर आप देख रहे हो कि बंधन बैंक का सिचुएशन पीएनबी का, इसलिए मैं बंधन बैंक को सिर्फ ट्रैक ही करता हूं, डाल नहीं सकता हूं. एक और कंपनी के साथ ये खेल सकते हो, लेकिन वो भी खराब से और खराब होता है. एसबीआई कार्ड्स. ओके. साला उसका तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ के 9% हो गया अभी. ठीक है, 3% था, 4% था, ऐसे 4 साल में 9% में. बट हियर इज द थिंग, राइट? इफ एसबीआई कार्ड्स का मैनेजमेंट गेट देयर शिट टुगेदर, क्रेडिट कॉस्ट कमिंग फ्रॉम 9% टू लेट्स से 2% और 3%, जो हिस्टोरिकल लेवल पे था, even at 15% लोन बुक के ग्रोथ में, when your credit cost comes down so well, तो incrementally तुम्हारा EPS can grow 50%, 60%. ओके. तो इसका मतलब हमको ये गेम भी प्ले करना चाहिए, जो ग्रे एरिया है जहां पर पैरामीटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, वो नहीं है उस लेवल की 25-30. आराम से खेलो, लेकिन वहां पे वो इंप्रूवमेंट के कुछ इंडिकेटर के बाद खेलना चालू करो. कोई जैसे लास्ट मुझे याद है आपकी मैंने सेशन लिया था, उसमें आरओ एक पैरामीटर आपने बताया था. हाँ. अदर देन मैनी आई जस्ट मेंशन ईपीएस, आरओई, आरओ वगैरह, अगर ये सारे इंप्रूव हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं है, तो आपके हिसाब से प्ले करना चाहिए गेम? खेल सकते हो, बिकॉज ये ग्रोथ, मतलब देखो, ये खेल लिमिटेड खेल है, बिकॉज अल्टीमेटली एक पॉइंट के बाद तुम्हारा एनपीए इंप्रूव नहीं होगा. करेक्ट. लेकिन फिर भी पैसा बनता है. मैंने तो साउथ इंडिया बैंक, कर्नाटका बैंक, इन सब में डबल किया था 2022 में इन स्टॉक्स में. कैसे किया? साउथ इंडिया बैंक, कर्नाटका बैंक, सोचो, मतलब जिसको मैं नॉर्मल दिन में बात भी ना करूं. लेकिन वही है ना, प्राइस टू बुक पड़ा है 0.4, 0.3, मैनेजमेंट कॉन कॉल में बोल रहे हैं एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगा. हमारा कलेक्शन बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है, लास्ट मंथ का दिखा रहे हैं एंड ऑल दैट. सो अगले 2-3-4 क्वार्टर में ही वो एसेट क्वालिटी थोड़ा करके बढ़ा. साउथ इंडियन बैंक का स्टॉक 9 रुपए से हो गया 22 रुपए, 24 रुपए. तो खेलो, वो भी खेल सकते हो. मतलब यू डोंट हैव टू कर्टल योरसेल्फ टू वन टाइप. ओके. फेयर इनफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू निशांत. या ओके, अगला सवाल मैं लेता हूं. राज, आर यू देयर? राज जे प्रसाद. अगले पिछले बार शायद आपका कॉल मतलब ले नहीं पाया. Hi Raj. Hi. Hi Raj, can you hear me? Yes Raj, I can hear you. Oh, thanks for the storming session. Thank you Raj. Yeah, I have 2 questions. Yeah, the first one is, does it make a sense to look at the forward P if the guidance and performance is good? Yeah. And the second one is, if it makes a sense, then where to compare that forward P among the peers or with any other companies? See, ultimately in your portfolio you will have stocks from many sectors, right? So eventually you'll have to compare it across sectors also. Yeah. Your capital is limited. So, but then again, having said that, when you see 2 companies giving out 2 great growth guidance, but one forward P is 40, the other forward P is 90. And I understand both those businesses
and let's say both the guidance are great, let's say 30% plus, तो मैं शायद 40 वाले में डालूंगा इंक्रीमेंटल कैपिटल, वो 90 वाले जैसे डोम्स फॉर एग्जांपल डिडंट ऐड, यथार्थ ऑल्सो डिडंट, यथार्थ का से रीजन अलग है, आदित्य विजन इज अ गुड एग्जांपल, 26-28% से ग्रो किया, फॉरवर्ड भी उसका 20-25% का ग्रोथ इंजन ही है वो, ठीक है, लेकिन वही है ना, फॉरवर्ड 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे इफ यू कैलकुलेट आदित्य विजन का पी दैट्स कमिंग आउट टू बी 60 और 70. So again, like I mean like एक का 25% के लिए 90 p, एक का 70 p for 20-25% का ग्रोथ इंजन. So दोनों मेरे को अभी जैसा सिचुएशन में जो स्टॉक्स है तो मैंने उस पे उतना ऐड नहीं किया. That's the thing. Oh, that's it. Okay, thank you so much. Thank you. Thanks. Okay, next question we'll take from Ajit. Ajit ji, you can unmute and ask your question. क्या करती हो? कर दे रहा मैं सोची क्या करें Raj, can you please mute your mic, please? Hello, can you hear me, sir? Yes. Hi, Ajit. Good evening. सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल से हटके है सर, और एक छोटी सी मैं बात बोलना चाह रहा हूँ. एक्चुअली मैं 5-6 साल से इस फील्ड में हूँ सर, लेकिन मैंने ट्रेडिंग से जर्नी शुरू किया था. 3-4 साल मैंने ट्रेडिंग किया, फिर वो लॉस वगैरह सब हो गया तो मैंने छोड़ दिया. फिर उसके बाद सोचा कि कुछ तो लोग पैसा बनाते होंगे, तो मैंने इन्वेस्टिंग पढ़ना शुरू किया. पढ़ते कुछ कोर्स भी किया, दाएं बाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फलना डिमाका, वेरिएंट परसेप्शन, ये वो सारा चीज कर लिया सर लाइफ में. फिर भी लगा कुछ चीज तो मिस कर रहा हूँ मैं लाइफ में, है ना, कुछ जम नहीं रहा था बात सर. तो फिर इधर 1-2 महीना पहले आपका मैंने एक वीडियो देखा था इन्वेंट्री पे, जो कि कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग का जो था वो, उस पे देखा, कैपेक्स पे देखा, फिर कुछ और बिजनेस एनालिसिस का कुछ वीडियो मैंने देखा, है ना, जैसे कि हाई पी, हाई ग्रोथ, लो पी, लो हाई ग्रोथ, ये सब फलना. तो वो सारा मैंने वो देख लिया. फिर इस सेशन को मैंने ज्वाइन किया. इसका पहले भी फाइनेंशियल का सेशन ही मैंने ये किया था, इनरोल किया था. अच्छा, तो मैं अटेंड नहीं कर पाया, आज तक पढ़ भी नहीं पाया, वो ऐसे ही रखा हुआ है. अच्छा. एक्चुअली मैं पेशे से नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ, तो टाइम भी ज्यादा नहीं मिलता मुझे. तो मेरा क्वेश्चन सर ये थोड़ा सा लाइटर नोट पे है सर. एक्चुअली इधर हमारे एक्चुअली आई बिलोंग्स टू बिहार सर, तो यहाँ पे कोई पढ़ता लिखता ज्यादा नहीं है ये सब चीजें, और मेरे पास भी टाइम है, लेकिन अनफॉर्चुनेट मतलब बस जैसे तैसे इस फील्ड में मैं आ गया, गलती से मैं आ गया एक्चुअली. तो मेरा क्वेश्चन सर थोड़ा सा ये है सर कि एक्चुअली प्रेरणा मैम से भी है क्वेश्चन, कि एक्चुअली मैं जो पैसे कमाता हूँ सर वो मैडम के हाथ में दे देता हूँ. मैडम को बोलता हूँ कि अब हमको पैसे वापस दो कि मुझे इन्वेस्ट कर, तो पैसे देते हैं सर, है ना, और उसको इन्वेस्ट से बहुत डर लगता है. तो कैसे उसे समझाऊं कि सर पैसे दिया करे कि उसको इन्वेस्ट किया करे सर, है ना. अब दूसरा चीज सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैसे मोटिवेट करूं कि वो लोग भी पढ़े सर. देखो, आपको यहाँ पे एक ही बात मैं बोल सकता हूँ कि आपको खुद पढ़ के उनको नॉलेज से इंप्रेस करना है. आप अगर खुद ही आपको कुछ नहीं आता है और आप अगर बार बार लोगों को बताते हो कि मैं लॉस मेक किया हूँ ट्रेडिंग करके, तो आपको वैसे ही कोई भरोसा नहीं करेगा. जी सर. अगर आपने कॉन कॉल्स पढ़ा, पीपीटीज पढ़ा, कंपनीज को ट्रैक किया, तो आप उनके सामने जब बैठोगे ना, आपको उनको बोलना भी नहीं पड़ेगा. आप 10-15 कंपनी के बारे में ऐसे बोलोगे ना, ऐसे वैसे हाँ करके आपको देखेगा, ऐसे लगेगा कि भूत देखा है. तो रेस्पेक्ट बढ़ता है नॉलेज के साथ. आप लोग मेरा कंटेंट क्यों देखते हो पता है? नॉलेज की वजह से ना. जी सर. वरना मेरा क्या रिस्पेक्ट है? ये काम को मैं अगर आपको मतलब अगर मैं अपने आप को इस काम से निकाल लूं, मैं कौन हूं? कोई नहीं हूं. मेरा पूरा आइडेंटिटी है ये. So you respect me for the work I do, not for के like मैं बचपन में कैसा था. Agree. So आपको खुद से ये काम करना पड़ेगा. और फिर उसके बाद जब आप देखो ना, आपको तो पूरा प्रोसेस पता भी चल गया. यू स्टार्ट योर वर्क, आपके मिसेज हो, आपके फैमिली में भाई बहन, आपके घर वाले जो भी लोग और है, उनके साथ जाके डिस्कस करो. बिकॉज मैं जब जॉब छोड़ के कलकत्ता आया था ना, मेरा पेरेंट्स भी मुझे उतना ट्रस्ट नहीं कर रहा था. माई नॉलेज गॉट मी थ्रू ना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे सॉ के लाइक ओके, बंदे के पास जो भी पैसा है स्टॉक मार्केट में ही डाला है, ठीक है. वो भी बताते थोड़ा एफडी कर ले, इधर उधर कर ले, ये कर ले, क्या कर रहा है, ठीक है. लेकिन देखा कि मार्केट में भी है और पूरा टाइम मार्केट का ही बातें करता है. तो धीरे धीरे करके दे ऑल्सो बिकेम लर्नेड ह्यूमन बींग्स बाई इन माई प्रेजेंस. यस सर, है ना. सो बस वही है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम. सो आपसे चालू करो एंड उसके बाद आगे जाके आप देखोगे, आप अगर ठीक हो, आप अगर एकदम स्ट्रांग हो,
तो आपके आसपास के लोग भी आपके तरफ ग्रेविटेट कर लेगा, सो कोई टेंशन नहीं है उसका। सर मैं आपसे सहमत हूँ सर, लेकिन बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है सर मोटिवेट करना सर, बहुत तो डिफिकल्ट अल्टीमेटली बात वही है, अगर आप चाहते हो कि सही में चाहते हो कि हो तो आप करके दिखाओगे। सर मोटिवेट लोग तभी होंगे सर जब इस फील्ड में हम सक्सेसफुल होंगे, तभी देखो होगा। बात यहाँ पे मोटिवेशन के है नहीं, बात यहाँ पे है कि क्या आपको इसमें कुछ करना है कि नहीं। मैं देखता हूँ कि मोटिवेशन उनको चाहिए होता है जिनको एक्चुअल में कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ मोटिवेशन ही चाहिए। जी सर। आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आप इस फील्ड का बाप बनोगे। कितने लोग ये तरीके से लोग नहीं समझते हैं, लोग इमोशंस पे चलते हैं। लोगों को लगता है कि लाइक सब ठीक होगा, मेरा मूड अच्छा होगा, ये आज वेदर सही होगा तब मैं थोड़ा काम कर लूंगा। ऐसा नहीं होगा। आपका बुखार होगा, आप लोगों को शायद ये पता नहीं है, कल मेरा बुखार था, ठीक है, कल मेरा बुखार था, परसों मैं सोया भी नहीं था, लेकिन जब मैंने सेशन किया वो मेरा जिम्मेदारी था। जी जी। सो द पॉइंट दैट आई एम सेइंग इज के लाइक आई डोंट केयर कि मेरा मूड कैसा है, आई डोंट केयर कि और क्या। एक एक्सक्यूज देना तो बहुत इजी है ना, लेकिन आपका ये जिम्मेदारी बनता है। और अगर आप ऐसे काम करोगे ना, मैं बोल सकता हूँ अजीत जी, आप 3 महीने में आपका जिंदगी, आपके फैमिली का जिंदगी पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर पैसे का तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज जो आपको ट्रस्ट करेगा उसका पैसा आपको मिलेगा, है ना। अच्छा सर, ये जो सेशन हुआ है इसका जो मेन जो पॉइंट है सर वो मैं बता देता हूँ सर कि क्या लर्निंग है आज का, या जो भी मैंने आपका वीडियो देखा है बिजनेस एनालिसिस पर कॉमन इन्वेस्टिंग, एक्चुअली 2 ही पार्ट मैंने देखा है ना। तो इसका जो मेन जो पार्ट था सर, जैसे कि मैंने काफी सारा मैंने थ्योरी पार्ट पढ़ गया सर, बैलेंस शीट फलना ढिमाका सब पढ़ गया, सर इस डॉट को मैं कनेक्ट नहीं कर पाया था सर। जैसे इन्वेंट्री, हमको लगता था सब दिन सर ये इन्वेंट्री खराब चीज है, इन्वेंट्री बढ़ा मैंने पैसा फंसा, मैंने कंपनी गया, ऐसा अभी तक मैं सोच रहा था। अब समझ आया कि इन्वेंट्री का मतलब क्या है, ट्रेड रिसीवेबल इन द लाइन सेल्स के साथ है, तो हो रहा है। तो अब सारा चीज कनेक्ट हो चुका है, ये सारा लिंक मिसिंग था अभी तक मेरे पास, बढ़िया बढ़िया, अब समझना शुरू हो गया है। यही आपके सेशन का बहुत बड़ा ब्यूटी बस रहा। अभी अप्लाई करना है आपको, ठीक है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर मैं अप्लाई कर चुका अभी हूँ। अप्लाई करोगे और आप मुझे मैसेज करोगे फिर उसके बाद, सर मैं 10 कंपनी पढ़ा, उसमें ये मिला, ये अच्छा है या बुरा है, आप बताओगे मुझे, ठीक है। प्रॉमिस करो मुझसे। मैं अप्लाई कर चुका हूँ सर, और कॉन्कॉल भी पढ़ना शुरू कर दिया हूँ, है ना। बहुत बढ़िया अजीत जी, बहुत बढ़िया। बस यही सुनना है और बस यही करो, मैं बता रहा हूँ। और आप ही मुझे एक दिन आके बताओगे कि अब तो बीवी का पैसा मेरा पैसा। पैसे अब ले लो भाई कब बोलेगी पता नहीं क्या आप ये सब चीजें पब्लिक जगह में बोल रहे हो। डोंट वरी, मेरे पापा का भी ऐसा ही सीन है। घर का एक ही कहानी है सर कोई हाँ, अलग और इसलिए तो मैंने शादी ही नहीं किया। आपने एकदम, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। ओके अजीत जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। ओके भाई, हाँ आपकी सही सर, मेनी थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर, राइट सर। ओके, अभी हम अगला सवाल लेते हैं। गाइस एक सवाल करके प्लीज, अभी हम और डिले नहीं कर सकते। सतवंत यादव, ब्रो कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अब सवाल पूछो अपना। कैसे करें यार। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ 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 सतवंत जी आ रही है, बताइए। बहुत अच्छा सेशन था। मैं एक्चुअली पहले भी क्लास ले चुका हूँ, जहाँ पे मैंने एक्चुअली इन्वेस्ट किया हुआ था, और वहाँ पे ना सर मैंने एक्चुअली बड़ी कंपनी में पैसे लगा रखे हैं सारे, जो एचडीएफसी, एशियन पेंट और बजाज फाइनेंस में काफ़ी पैसे इसमें मेरे फंसे हुए हैं। तो जो मैंने पहले लास्ट टाइम क्लास लिया था सर, वहाँ से ना मुझे जो आइडिया मिला था कि आप यूएस स्टॉक में भी लगा के पैसे बना सकते हो, तो मैंने उनके बोलने पे मतलब लगाया था उस समय, और मुझे थोड़ा लग रहा था कि हाँ लगा के बना सकते हैं। तो सच में मैंने पैसे बनाए भी, जैसे मेटा, गूगल वगैरह पे काफ़ी अच्छे पैसे बनाए मैंने, 4 गुना पैसे हो गए थे मेरे। तो उसके बेसिस पे मैंने सोचा यार सही, और जो जैसे उन्होंने मुझे पढ़ाया था उसके बेसिस पे मैंने एचडीएफसी, क्योंकि सब अंडर वैल्यू मुझे लग रहे थे सारी स्टॉक्स, तो मैंने उसमें पैसे लगा के, मतलब अभी मेरे बहुत सारा पैसे अटके हुए हैं उसके अंदर। आप मेजॉरिटी बोल सकते हो जो मेरे पोर्टफोलियो का फंड है, जो मेरा कैपिटल है, उसमें फंसा हुआ है सारे, जैसे एसबीआई कार्ड भी हो गया उसमें, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, तो इसमें सारा पैसा मेरा अटका हुआ है। तो अभी जैसे मैं आपका कुछ टाइम से वीडियो देख रहा हूँ, तो वहाँ पे ना मेरे को मतलब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि हाँ कुछ यही रीजन होंगे जिसकी वजह से स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं, है ना। तो मेरा सवाल सर आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जैसे कि आप बोल रहे हो कि कंपनी को ट्रैक करो, तो अभी तो मैं नया-नया ट्रैक करना स्टार्ट करूँगा, है ना, कंपनी। तो मैं क्या करूँ? जो मेरा कैपिटल ऑलरेडी स्टक है इन बड़ी कंपनीज़ में, तो इसको मैं पहले, जब मेरे को एक
जैसे मैं कॉन कॉल वगैरह पढ़ना स्टार्ट करूँ, जैसे मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगे, तब मैं धीरे-धीरे मूव करूँ कैपिटल, या मतलब जो कंपनी मुझे अच्छी लगती है छोटी स्मॉल कैप में, उसमें मैं वो देखो, अगर आपके घर में आग लगता है, धीरे धीरे निकलोगे या जल्दी निकलोगे? जल्दी निकलूँगा सर। तो फिर तो पैसों के मामले में अलग क्यों है? तो उसमें सर जैसे मान लीजिए मेरा फॉर एग्जांपल मेरा 70-80%, ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप के भी कुछ स्टॉक्स मैंने ले रखे हैं जिसमें अभी मार्केट नीचे चल रहा है तो उसमें भी पैसे नहीं बन रहे हैं। तो एक थोड़ा-सा ना वो डर लगता है कि अगर यहाँ पे, क्योंकि बड़ी कंपनी में एक बार को चलो रिटर्न्स नहीं बने तो लॉस भी नहीं होगा। डर क्या लग रहा है? एशियन पेंट्स में तो घाटा पे घाटा खाए जा रहे हो। हाँ मुझे सर। ये समझ नहीं आता है। 7% का सेल्स डिग्रोथ हुआ, पैट तो उससे भी ज्यादा डिग्रोथ हुआ। एटलीस्ट बर्जर पेंट 0% है, ये तो -7 है। जी तो सर जी। अब देखो, उसके बाद भी तुम बैठे हो किस लिए? कौन सा सेफ्टी दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सेफ्टी पता है सर बस प्रॉब्लम क्या है? तुम अपना जी। टाइम बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा मेन ये है पैसा नहीं, मेन तुम्हारा जो करेंसी है दुनिया का वो है टाइम। जी, लिमिटेड जी। टाइम के लिए दुनिया में आए हो, राइट? तो ये टाइम को बर्बाद किए जा रहे हो। तो तुम्हारा हर मिनट, मैं क्यों बोलता हूँ एक्टिवली इन्वेस्ट करो, एक्टिवली ट्रैक करो, बिकॉज ताकि तुम अपना टाइम को बर्बाद ना करो, है ना? सो जी सर। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे भाई, पैसा निकाल के कैश में रख दो। मैं एशियन पेंट्स को बेचने को, देखो, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट ऑल आई एम जी। सेइंग इज, अगर तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है, घर में आग लग रहा है, फिर भी तुम चेयर में बैठे हो, भाई धीरे धीरे होगा। जी समझ में आ सर सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए मेरा मेजोरिटी जो कैपिटल है वो इसमें एलोकेटेड है, सारी जो लार्ज कैप कंपनी है ना, तो अभी छोटी छोटी कंपनी जो जैसे आप बोलते हो कि क्योंकि जो आप मोस्टली मैं देखता हूँ जो आप स्टॉक्स वगैरह के बारे में कभी बात भी करते हो तो मोस्टली स्मॉल कैप कंपनी होती है या माइक्रो कैप कंपनी होती है ना, तो इसमें क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा डर लगता है कि कम से कम अगर कुछ मैंने पढ़ो भाई, पढ़ोगे नहीं तो डर लगेगा ना। तुम एक भी कॉन कॉल नहीं पढ़ते हो, मैं लिख के दे सकता हूँ। हाँ नहीं पढ़ता हूँ सर, हाँ, क्योंकि तो अभी फिर तक बात नॉलेज कहाँ ही आता है? तो पहले पढ़ो, ये जो प्रोसेस बोला, पहले पढ़ो, 200 कंपनीज पढ़ो दिन में। जैसे मैंने एक बंदे को यही बोला ना कि बिना पढ़ के क्या सा डर, तुम्हें आता नहीं है। सोचो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ, ठीक है? तुम्हें पता है राइट, के लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो बॉक्सिंग और मिक्स मार्शल आर्ट्स होते हैं वो एक स्किल है, राइट? तुम्हें मैं बिना कारण एक बॉक्सिंग रिंग में डाल दिया एक बॉक्सर के साथ, मार खा खा के तुम्हारा कचूमड़ बना देगा, और वही हो रहा है आज यहाँ पे। तो तुम पढ़ो, तुमको डर क्यों लग रहा है? तुम अगर ट्रैक करोगे, देखोगे, तो अल्टीमेटली सभी तो धंधा ही है, छोटा बड़ा कुछ भी हो। जो धंधा अच्छा करेगा उसको और रिवार्ड करोगे, जो बुरा रहेगा उसको काट काट के निकाल दोगे। तो अल्टीमेटली गेम वही है। और अगर तुम्हें पता है धंधा क्या कर रहा है, जैसे एक बंदे ने, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी का नाम बोला, एमरल्ड फाइनेंस करके, उसके बारे में किसी को पता भी नहीं, इतना छोटू सा एक कंपनी है, लेकिन बिजनेस इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है? तो तब तुम क्या बोलोगे? नहीं, वो तो एचडीएफसी बैंक नहीं है। तुम एचडीएफसी बैंक जिसमें 6% का ग्रोथ है, रिस्क तुम्हारा ज्यादा है उससे ज्यादा, बिकॉज एटलीस्ट उसको पता है वो कर क्या रहा है, तुम्हें पता भी नहीं है कर क्या रहे हो। तो 6% -6%, 2% का ग्रोथ इंजन में बैठे हो, तो इससे बड़ा रिस्क लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। यू आर टेकिंग द हाईएस्ट रिस्क, और जो तुम्हें लगता है कि तुम रिस्क फ्री हो। राइट सर, ठीक है सर, धन्यवाद आपका। चलो, थैंक यू सो मच ब्रो, मिलेंगे। चलो, हाँ, ओके सर। ओके, अगला सवाल हम लेते हैं शंकर। हाय शंकर, गुड इवनिंग ब्रो। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते प्रेरणा मैम। सर एक्चुअली 2 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ सर। बहुत एक्चुअली एक स्ट्रक्चर वे पता नहीं था सर। 2 साल से इधर उधर हाथ पैर मार रहा हूँ सीखने के लिए, वैल्यू पिकर फॉरम, ये वो पूरा बेसिक्स पी, ये वो बहुत सीखने के लिए कोशिश किया था सर। लेकिन ये इस सेशन में भी हर एक पैरामीटर्स का मीनिंग पता था सर, लेकिन ये नहीं पता था कि रिलेशन क्या होता है, कि कैसे उनको कैसे स्ट्रक्चरल वे में उनको समझे कि क्या चेंज होने से उसका रिजल्ट क्या होता है। तो उससे बहुत हेल्प मिली सर। थैंक यू भाई। और सर आपके ही गांव से और एक फंड मैनेजर थे, उनका बहुत वीडियो सर, वो कोरेगांव पार्क में उधर पुणे में रहते हैं। उनका पोर्टफोलियो के स्टॉक्स वगैरह लेके बहुत कोशिश किया था, लेकिन उनमें पैसे कुछ बना नहीं। टाइम लैप्स हुआ है बहुत, टाटा एलेक्सी और एसबीआई कार्ड्स, वो सब बहुत शेयर्स लिए थे सर, उसमें पैसे बना नहीं। रिसेंटली आपका एक वीडियो देखा था कि 10, 20, 30 ईयर्स से कोई रिकमेंडेशन पूछ रहा है कि 10, 20, 30 ईयर्स शेयर्स लेके बैठना है।
वो देखने के बाद मैंने बोला कि कहाँ थे आप, मतलब ऐसा लॉजिक इससे पहले उनका सुनना बंद करो जो तुम्हें 10 साल का किया कहानी है। श्योर किया हूँ सर, किया हूँ। मतलब वो गलती करने के बाद ही पता चली। तो आपके इस वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि भाई कितना लॉजिकली बात कर रहे हैं। तो आप बाद में आपका पूरा यूट्यूब में चैनल में जो भी आपने अपलोडेड वीडियो से पागलों की तरह वन बाय वन 2 दिन बैठ के पूरा वही किया सर, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ मैंने आई समझ में आ गया तुम मेरा कौन से वीडियो का बात कर रहे हो। हाँ मैं उसके बाद आपके अपलोडेड सारे वीडियोस देखा तो इतना लॉजिक बना, इतना सेंस बना कि एक्चुअली पता ही नहीं था सर, दिशाहीन भटक रहा था। तो आपके वीडियो देखने के बाद इतना सेंस बना, पता नहीं था कैसे पैसे बनाते हैं, लेकिन अभी एक स्ट्रक्चरल वे। एक्चुअली आपके वीडियो देखने के बाद मैंने आपका कोर्स भी खरीदा था सर फाइनेंशियल वर्कशॉप के ऊपर। उसके बाद उसके बाद पता चला कि कौन से शेयर्स मेरे पास है जो गलती उनको रखने का कोई सेंस नहीं बनता है। एक बात बोलूं शंकर, यहाँ पे सबका मेन प्रॉब्लम क्या होता है, सब यहाँ पे पैसे बनाने के लिए उत्सुक हो रहा है। मैं यहाँ पे उल्टा बोल रहा हूँ कि जहां पैसा बनता नहीं है वो आइडेंटिफाई करके उसको काटो या हटाओ। राइट सर। आप तुम्हारा पूरा मेंटालिटी ये नहीं होना चाहिए कि पैसा कहाँ बनेगा। तुम्हारा हमेशा उल्टा मेंटालिटी होगा कि कहां से मैं काटूं। इवन तुम्हारा होल्डिंग पे भी हमेशा जज करो, ठीक है, कि यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू कट एंड यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू सेल एंड नो कि प्रॉब्लम कहां पे है बस। बिकॉज जहां पे प्रॉब्लम नहीं बचता है ना, तुम ऑटोमेटिकली वहां जाओगे एंड बाय डिफॉल्ट पैसे बना लोगे। आपके मिलने से पहले यही गलती हो रहा था सर, आपके मिलने के बाद ये थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। आपके फाइनेंशियल वर्कशॉप लिया था, उसके बाद पता चला कि कौन से नहीं रखना है पोर्टफोलियो में। उसके बाद मैंने बहुत लॉस खाया है एंड दैट इज बहुत स्ट्रक्चरली थिंक करके लिया है कि अभी ये गलती हुई है, अभी से थॉट प्रोसेस चेंज करके पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना है। पहले 2-3-4 साल में कितना मिस्टेक किया है ऐसे करके अभी ये तो नॉर्मल है भाई। तुम अभी तो तुम्हारा 2 साल हुआ है, राइट? राइट। अगले 4-5 साल में तुम देखना, मतलब इतना छापोगे कि लाइक ये 2 साल का मिस्टेक याद भी नहीं रहेगा। बट यू नो व्हाट, ये 2 साल का मिस्टेक ही तुम्हारा रियल लर्निंग है। जी सर। ये जो एक स्टेप करके मिस्टेक होता है ना, ये जो स्टेप्स करता है, राइट, मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी जो मार्केट में आता है और मिस्टेक करता ही नहीं। सर मार्केट से वैसे तो पैसे भी बनाए सर, मार्केट विल ऑलवेज आई मीन हाँ करेक्ट, पैसा ऑफ कोर्स तुम बनाए, गलती से भी बन जाते हैं पैसे कभी और ट्रू मेरा तो पोर्टफोलियो का ऐसा था सर, लास्ट 2 इयर्स में 15-20% से ज्यादा नहीं होता था सर। तो मैंने क्या किया था कि ज्यादा पैसे लेके आईपीओ में डालने लगा कि आईपीओ में गलती से लग गया तो उसमें पैसे तो वहां पे एक वन टाइम गेन। हाँ, ऐसे एचएनआई कैटेगरी, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई कैटेगरी में उधर लगाओ, 50% ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल गया तो 1-1 लाख बन गया एट ए टाइम। वो पूरा पोर्टफोलियो से अच्छा बना रहा है एक शॉट। तो ऐसे बहुत कुछ किया सर, लेकिन फाइनली आई एंडेड अप विद यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू ब्रो ये सेशन आने के लिए, और इसको भी अप्लाई करना है, ठीक है? जी सर, करूंगा सर। सर 1-2 छोटे क्वेश्चन है सर प्लीज। हाँ जल्दी बोल दो बिकॉज और भी लोग है ना। सर काका इंडस्ट्रीज का आप बताए थे ना सर, रिजल्ट्स आते हैं तो रिजल्ट्स में कुछ प्रॉब्लम मिलता है कि बाद में वो लोग, इसका नाम बोले काका इंडस्ट्रीज का आपने बताया था कि ट्रेड रिसीवेबल्स कुछ था, बाद में उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। हाँ, लेकिन उसका एक प्लांट जो नया प्लांट में गया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रहा था, तो उनका डिमांड बहुत था लेकिन माल बना नहीं पा रहा था। राइट। लेकिन जब वो रिजल्ट्स आते हैं तो रिजल्ट्स में तो वो नेगेटिव दिखता है सर। नहीं, वही तो है, रिजल्ट तो नेगेटिव दिखा ना, सिर्फ 9% का ग्रोथ। कौन ऐसी कंपनी है जो साल के बिगिनिंग में 30% का गाइडेंस दिया था फॉर 3 इयर्स, 1 साल भी नहीं, ठीक है, लेकिन H1 में आता है 9%। तो आई वाज लाइक ये क्या हो गया? तो फिर उनका रिजल्ट के बाद कॉन कॉल में वो लोग ये बताता है कि लाइक भाई हमारे वो प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। अब सोचो, ये कॉल के टाइम था नवंबर के एंड तक, ठीक है, फिर उसी के बाद मैंने काका में थोड़ा सा डाला, ठीक है, थोड़ा सा पैसा डाल के रख दिया। एक अच्छा पॉजिटिव आया, वो है कि जैन के 2 तारीख या 3 तारीख को जब उन्होंने एक अपडेट दिया और उसने ये बोला कि वो प्लांट में अभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और मैनेजमेंट का कॉन कॉल में ध्यान से भाषा सुनो, उन्होंने क्या बोला कि 9% से हम H1 में ग्रो किए, बट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा और उसके बाद हम इतना माल बेचेंगे कि हमारे साल का 30% का गाइडेंस स्टिल टिका रहेगा। राइट। तो इसका क्या मतलब, वो ये बता रहा है कि सेकंड हाफ में वो 50% से भी ग्रो कर सकता है, मतलब वही 50 + 10/2 = 30 ओवरऑल। मतलब
एकदम ऊपर नीचे करके. So basically Kaka can grow at a much faster pace in H2 over last H2. अब of course इस सिनेरियो में मैं प्ले कर रहा हूँ. अब सोचो, अब मैंने पूरा तो पैसा डाल नहीं सकता हूँ, छोटा करके एलोकेशन किया. जब जैन में ये अपडेट आया तो मैंने और थोड़ा डाला. समझ में आया क्यों किया? राइट, बिकॉज ये जो इंफॉर्मेशन था ये मेरे फेवर में था. राइट, तो मैंने और थोड़ा डाला और थोड़ा एलोकेशन को थोड़ा सा बढ़ाया. और अब मुझे वेट करना है अगले क्वार्टर का नंबर, बिकॉज अगर अगले क्वार्टर में मैं देखता हूँ कि 40, 50, 60% से सेल्स ग्रोथ हुआ, मतलब क्या, मैं उस दिन और डालूंगा. समझ में आ रहा है? लेकिन अगर उस दिन मैं देखता हूँ कि 15%, साला झूठा पूरा बेच दूंगा. फिर जा तू यूनिवर्सिटी रख अपने पास. सर, इफ समवन होल्डिंग काका इंडस्ट्रीज एट दैट पॉइंट ड्यूरिंग रिजल्ट टाइम, अगर रिजल्ट में दिखता है कि बहुत नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन बिफोर दे मेक ए कॉन कॉल देयर इज सम विंडो पीरियड ना सर, उस टाइम पे वो रिजल्ट के ऊपर एक्शन लेके कट करते हैं ना सर, हम बेच देंगे ना शेयर्स एट दैट देखो, पॉइंट. मैं सिर्फ कंपनी के एक्शन पे फोकस करता हूँ. मैं और वैसा कुछ नहीं करता हूँ. मैं टाइम करने का भी कोशिश नहीं करता हूँ. सिंपल सी पॉइंट नहीं है. सर, टाइम करने का नहीं है. देखो, किसी के पास वो शेयर्स पड़ा हुआ है और वो रिजल्ट आया, रिजल्ट देख के तो 9% का बहुत कम दिखेगा, लेकिन जस्टिफिकेशन देखने में, कॉन कॉल होने में तो बहुत टाइम है. तो हाँ, तो थोड़ा आप काट दो. हाँ, समझ गया. ये एक्चुअली एक वैलिड क्वेश्चन भी है. कॉन कॉल और रिजल्ट के बीच में कभी कभार 1-2 दिन का गैप भी आता है ना. राइट. हाँ, रिजल्ट देख के मैं काटता हूँ फिर. हाँ, अच्छा, वो बाद में कॉन कॉल के बाद फिर से जोड़ने वापस जोड़ता हूँ. हाँ, राइट. ओके. यही फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें रखना है भाई. मतलब यहाँ पे ये कोई लोगों का मैं देखता हूँ इतना इमोशनल होता है ना, ऐसा लगता है कि एक्स गर्लफ्रेंड को मैं बोल रहा हूँ वापस लाने के लिए लाइफ में. बट ऐसे ये तो नहीं है. राइट, मतलब तुमने जब बेचा तब डील खराब हो गया था, लेकिन उसके बाद कॉन कॉल के बाद डील उल्टा घूम गया. राइट, तो फिर से ऐड करो, है ना. सर. गुड क्वेश्चन एक्चुअली. सर, क्वार्टरली रिजल्ट्स के पहले जो अपडेट्स मिलते हैं ना सर, वो अपडेट्स भी उधर अनाउंसमेंट सेक्शन में ही होता है. सब वही सब स्क्रीनर में आ जाएगा. तुम अगर ट्विटर में खोलोगे ना, ट्विटर में तुम लोगों को फॉलो करो, मतलब देखो कोई ना कोई अपडेट दे ही देगा उस दिन का. फिर उसके बाद तुम देखोगे बीएससी एनएससी में जाओ, या फिर तुम वो उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम है ना वो स्क्रीनर में वो जो अनाउंसमेंट और डॉक्यूमेंट सब आ जाता है. उसका कोई टेंशन नहीं है. मतलब आज नहीं तो कल तुमको मिल जाएगा. Okay, I think we can move to the next question here. Santosh ji, are you there? Hi, Santosh. Hi, Raj. How are you? I am fine, Santosh. Yeah. Are you exhausted? No, I'm never exhausted. I am like that bunny in that क्या बोलते हैं ना वो Duracell battery. I can see that. Since 2 days, you've been non-stop. I love to talk. No, but that passion is what is amazing. You know, your passion for research comes through in your every word. You know, that is what really. Yeah, I love the work, bro. I love the work. I mean, my entire identity is this. I mean, and what would be what is amazing is the journey ahead for you, because you are just starting. I can see your channel will grow in leaps and bounds, because very few are as authentic as you. Okay, thank you so much. But here is the thing, right? I mean, of course, like I know it'll grow and it'll grow big and all that thing, right? But my job is always to ensure that, you know, I enjoy what I do. Like if you take me away from this work, weirdly, like sometimes I feel like, okay, I will leave this work, I will chill, and let's say I go to a beach. 10 to 15 minutes later, I come back and read another con call. So which is amazing, na? Which is amazing that this is something very few people are having that fortune to say that, you know. Most people never get to the passion. Yeah, true. Because you know what, that the thing was, I'll tell you, when I was in my corporate days, I mean, I can go back to my school days and tell you the first thing I really loved was cricket, batting. Okay. My parents took me out of that after I reached class 9 and all that. Okay. So that was a regret. And then I could never find anything like which was, you know, even remotely interesting to me. Okay. Here and there and all that. And then like when I was in corporate, like TCS, before my MBAs and all that, I started this, I see the people around me making some trading money and all that. Right. Then when I went for my MBA, I started doing some more research on my own only. Okay. That was the time I used to do research on weekends when people used to go out and party. Even at my corporate also, same thing. Like I didn't care. Okay. I should just sit, read and all that. And everybody used to respect me for this work only. Okay. But I didn't get paid. Never had any audience and all that. So I did this work for 5-6 years for some very closed groups. And then I took that call. Okay, people are listening. Like for example, Deloitte MDs are listening to me on stocks, but they don't even care what the fuck do I do on my work. Okay.
They would come to me with a pen and paper and say, like, bro, let's sit, tell me what to do. And then I realized that point in time, this is where I can beat them. In that corporate ladder, I cannot beat them. When will I become MD? I don't even know, right? Yeah. If I go out and let's say take him as a client, right? Yes. Then the things change. And you know what? That's exactly what I did. I left my job at Deloitte, came back to Calcutta with, I think, 20, 25 clients from Deloitte and some from my colleges and all that. So, I mean, and then it has never changed. I've always been like this. And now I get paid for doing this. So, great. You're actually living what you thought at that point, correct? Yeah. And you know what? It was an accident also. And it wasn't Santosh ke like, you know, I planned it, right? Stock market, the entire thing, it just happened by accident. I am an engineer, electronics engineer, worked in an IT company, TCS, right? And the thing was, ke like, I had no idea. Like, maybe because I didn't have a background in economics, there was no shitty teacher who taught me shitty economics and accounts. I liked it because I read this on my own. I have seen one thing, that commerce background people are bad investors because they were taught the same thing, the balance sheet, in the wrong way. So they don't even want to see a balance sheet today. Yes. That's Like so true. me, I don't want to research IT stocks because I worked in TCS. So because I didn't have a commerce background, I had a fresh start and I self-learned all these things. And it just went on and on and on. I mean, it was such an amazing journey. And today also you see, right? I mean, the point is, like, I actually don't care how many people are listening to me. Like, I just can sit and talk and talk and talk and read. So you see Prerna also, right? 99% of the time, like, we discuss work only. So my entire thing now, when I meet my friends also, if they are not talking stocks, I get bored. Okay. So yeah, and they also now, And like, there are enough numbers. You don't have to worry because there's so many of them that even if we do throughout the day, all through the year, it will never end. Yeah. And you know what? Taking this whole thing online was that game changer. Like coming onto Twitter and YouTube and start making videos. Because the point was, then I realized, because the first 2 years, I don't know, like most people know me from Twitter or YouTube, but I wrote on LinkedIn for 3.5 years before coming onto Twitter and YouTube. Nobody knows that. And LinkedIn is a platform where I used to write, right? Same things I used to write. I didn't make videos, but I used to write every day, 4, 5, 10 posts. But since it's LinkedIn, right? I mean, who would want to like give engagement to a guy talking about equity research on a platform where people are talking about becoming senior managers? So yes, you get the point here. But there I took a plunge because I was a bit scared before coming and making videos because I thought I'll be trolled. Right, but no, then it is true actually that the way you are very transparent, no? You don't hide anything. So there is that risk that somebody might always troll. When somebody is authentic, they'll usually troll. You know, when somebody is inauthentic, they'll always be like, they can always polish it. They can always show something which is only acceptable. But in your case, you don't hide anything. That because takes a lot of courage. I think one thing for me is like either my people will respect me or they will not like me. Because in this way, I can actually, if I be me, then I can actually know who my enemies are also. So I won't waste my time with anybody. But you know, those people who are trying to good with everybody, right? The problem is like then I don't know what they are, like who they are good to. Are you talking bad? So that's why I came here and I told my parents also. Even they were like, why are you being so truthful, right? Like I remember once I started my Twitter journey, I started insulting HDFC Bank. And some fund managers came and insulted me. I'm not naming anybody. So the thing was, but the bank was not growing even then, even now also, right? So the point was, I will say the truth. Even if somebody comes and blocks me, it's fine. And I think it's better to live a life this way rather than, you know, hide and lie and all those kind of things. It doesn't make sense. And of course, here you see, right? I get the respect because if it's bad, I say it's bad. I don't care if you stay my client or if you come to my next workshop. I don't care actually. And I think that builds better human relationships when the relationship is not based on an outcome. It's based on you know, something which we are constructing together. So that's what I feel. No, I had the question regarding the same. Would you create a group for all of us so that a lot of us would have similar kind of questions, so that we can help each other out as well, and that would grow together kind of thing? Because all of us here asking doubts is really good, because even I get a lot of doubts cleared.
So that way, is there a group that we can have so that they can, when they post it out, we get the knowledge also, the benefit of that doubt. And Yeah, second thing yeah, is, whenever you have the next course or something like that, right? It would be much easier, because in this crowded YouTube world and all that, it's very hard. We may miss the videos. We may completely miss the videos. See, True. because there's so many, like it will be like hundreds of feeds come one after the other, right? That is question number one. The question that I have, the second one is, can you make a list of the people you follow so that we can directly go to them, like the YouTube channels or the Twitter ones, so that what I have found is it's a sea out there, and we get lost with the unnecessary things. We get lost. These are the good stuff. Like, for example, let's say for con call results, you go to Money Control for results day thing or something like that. So that if there's a list that we have, that's a good place to start. Otherwise, we'll go to everywhere and everything, and everyone is trying to catch our attention, right? Especially when it comes to Twitter. So many people are uploading every day. It almost feels like by the time you reach the right person, it's like you may never reach. We have got caught up for 6 months in the wrong person. If you have a document, whichever you follow, it's like I'll we can think also about it. give. Yeah, these are actually good ideas. Just one thing here. I mean, of course, I might start a group on Telegram, or I don't have any groups as of such now, but on WhatsApp or Telegram, yeah, I'll think about this. Okay, because right now, recently we just launched our website, so one step at a time. So before the website, we used to like conduct workshops on Google Meet. Okay, yeah, at least getting a bit organized धीरे धीरे करके, because because we didn't even have because अभी वो current account, GST registrations, website सब एक साथ हुआ. Okay, so now going forward, of course, yeah, we can set up groups and all that, right? So that you can say कि okay, जो भी मैं video बना रहा हूँ उसका link group में जाना चाहिए, and queries का response, so that you can also learn from others' queries. I get the point. And something like, for example, you were talking about the document, now whomever you follow, that document can be presented there, so that it reaches. There is a caveat here. Okay, I don't listen to any YouTuber. You know why? Because then I will lose my touch. So no, not just YouTuber. I'm talking about even Twitter or anything which you find is a genuine source. You find that this is a good source rather than going to all those hundreds of YouTubers. Can I tell you every day one giving source suggestions. on Twitter? Just one source. That guy's name is Srinidhi Iyer. Okay. That's it. Okay. That's it. Nids. I think Nids, NIDZ_rocks. Something like that is his Twitter ID. Okay. That's the one genuine soul in the stock market who I truly respect. The other soul is Prerna, is in the call. Okay. And when you spoke about Prerna, I had a question. A lot of us wanted Prerna's profile, because it will give us a good start to go with stocks which are good, rather than wasting our time on stocks which are, anyway not so good. Because we'll be reading the con calls. Now, at least let us go with the good ones to begin with, so that second benefit we have is, if we ask a doubt, she will have very specific insights on that particular doubt, because she has gone through that in and out. Rather than if I go through a stock which is random, out of nowhere, then probably the insight on that would not also be valid. Correct? Would it be possible? Santosh, when you tell profile, I didn't understand. What did you mean? Like, you mean the watch list of stocks? Not watch list, the ones that you are invested in, like the one Rajshri just gave us. that's Now, what I'm planning. That she'll do it. No, wait, I'll do it here only. Now, why will I have to do it separately? See, I have the same stocks that he has. Only a couple of them are different. Like, one is allocation is different because he and me are different individuals. Like, his top allocation is Kalyan. My top allocation is Sky Good. That is the difference here. Like, allocation is different. Okay. Second thing, Okay. he is more into financial stocks. You might know, he's like the daddy of finance. I don't like banks and NBFCs and everything. Like, have you ever gone to my YouTube channel and seen me discussing banks and NBFC? No. So he has this India Shelter, SBFC and everything. For me, instead of that, I love B2B companies. Okay, I love it. So what do I have instead? I have Tina Rubber, I have Kitex Garments, I have RBC Jewelers, all of these things, which are like, I would say 3-4 names, which are different from, let's say, what Rajoshi has. Right, like he has Osaya, he has India Shelter. I don't have these two companies, Osaya and India Shelter. Other than that, it is the same. It is literally the same. Only the allocation is different now.
Now, Okay, obviously, no, nobody can copy my allocation because my allocation is dependent on my confidence towards that business model. Like he is more confident on Kalyan because he confident in the sense. Let me get this straight. Like confidence, not like you are very sure ki like ye karke dikhayega. Not like that. Confidence in the sense ki like when you read it, you understand the business model like in your heart. Like you just know the model. Like you read it and you feel good about it, which I feel the same way towards Sky Gold because, like I told you, I prefer B2B models more compared to B2C. Like he prefers B2C and finance, all the financial companies. For me, it is more of B2B. That is why you will see my portfolio is filled with all of these companies. So here, Got it, Santosh, got what we are actually trying to say is, like, say for example, like Prerna has made money in Tinna Rubber, okay, Ace, Anup Engineering, and all those companies. You tell me, give me a company जो टायर बनाता है और उसका beads बना रहा है, ये बना रहा है. I mean, it doesn't attract me that much. ठीक है? But if it's a garment company selling jewelry, खाने का चीज बना रहा है ना? But that is the best thing, na? That is the best thing. Now you can benefit from her research. Otherwise, you will be too bored to go and research on those I'll topics. tell you this: the stocks that she listened to me and invested, she didn't make that much money that I did, and vice versa. Like for example, see, Tinna Rubber was a 5x for me. I kept telling him like buy Tinna. He didn't even put even one single penny. एक पैसा नहीं डाला मैंने. Like for the same thing, Osaya for him, I think, right? I do not know. Osaya में ज़्यादा नहीं, 50-60% का gain में है, but yeah, the game. See, the point, Santosh, we are trying to say is कि like I know we are working together and all, ठीक है, but also at the end of the day, अगर प्रेरणा कहीं पे पैसा डाल रहा है, बट यहाँ पे मेरा पैसे को मैं अगर उसमें डाल दूं, जस्ट वो डाल रही है ये सोच के, बिकॉज आई फील के लाइक एट द एंड ऑफ द डे मैं अगर उसके कन्विक्शन में, ठीक है, मैं उतना नहीं डाल पाऊंगा जितना वो डाल रही है. सो मे बी हम दोनों का 500% गेन तो होगा, बट एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसका ज्यादा होता. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, संतोष. Got it. And Prerna, I wanted to tell something interesting. Okay, I stay in Girinagar, Bangalore. Okay, and surprisingly, I was able to hear the sound of the guy who sells paper outside. The same guy. I stay completely in the other end. You stay in Girinagar, I stay completely in the other end. Like I am like the opposite sides of Bangalore, I'll tell you. I mean, the thing is what, like I stay in a residential area. There's like a bunch of villas and apartments here. So all these small vendors are allowed to come on Sundays or some particular time of come and sell, like that way. Otherwise, they're not allowed inside society. So I understand. कहाँ से हो तुम? I was almost thinking you might be kilometers away. हाँ, तू workshop online क्यों सुन रहा है? Physically सुन लो. And Rashri, I had one genuine question. You said one very important thing. These are sectors I don't understand. For certain things you said, right? This really made me wonder, because you're so good in understanding sectors. Why would you say that? Because if it's difficult for you, I don't can't like make it. sense. See, it's like that girl, okay? So there will be some people, some girls who are very pretty to some other person, but you might not like that person. And you can नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि you are not able to get the sector, ना? उसका मतलब ये नहीं है. Ultimately, I can get. See, मुझे IT का सारे कंपनी समझ आता है. But because मैंने TCS में काम किया, तो क्या होता है जब मैं पढ़ता हूँ तो अंदर से गुस्सा आता है. ठीक है. So what I'm saying is कि like मतलब कल अगर कोई IT कंपनी भी आएगा मेरे सामने, तो शायद मैं उसको मतलब बड़ा एलोकेशन नहीं कर पाऊंगा. जो मजे से लेट से ज्वेलरी में पैसे बना रहा हूँ, रिटेल अपैरल, ठीक है, बिस्किट बनाने, घड़ी बनाने वाला कंपनी, आहा, ठीक है, प्राउड ऑफ दोस कंपनीज. मे बी वो आईटी कंपनी वही ना पोर्टफोलियो के नीचे का एक पार्ट में पड़ा रहेगा. Okay. And I would be over eager to sell that stock. I bought IT stocks. I actually bought IT stocks, but क्योंकि मैं ऐसा सोच, I started thinking like this. If it is difficult for you, that would be close to impossible for us. Somebody who's starting off. No. Nothing to that. मैं उल्टा बोलता हूँ कि if you have worked in a bank, let's say आप banking को अच्छे से पढ़ो. But problem क्या होता है? The person who's working in a bank is in a shit job, for example. So he won't want to study banks. जो मेरे IT के साथ हुआ है. So it's good, right? But there are certain sectors, like if you tell me, let's say for example, pharma. भाई मुझे US FDA का वो लोचा I haven't understood. Financials में in the loan lending category, insurance, I gave up actually.
मैं 2 साल कोशिश किया HDFC लाइफ को ट्रैक करके. I can't make sense. See, I can still tell you what those definitions are. Value of new business premium क्या है, VNB क्या है, ये क्या है. I can tell you the definition, but I don't know the meaning behind those words and how the numbers are coming up. छोड़ दिया. It's okay. तो अगर इंश्योरेंस में कोई मल्टीबैगर निकलता भी है तो चलेगा. I mean वही वाला पॉइंट है ना कि I don't have to involve myself in every party around myself. So that's it. Rashri, any idea about international investing that you want to do a seminar or anything like that on? Workshop on? मतलब है तो रिसेंटली अब तो जर्नी चालू किया है, मतलब 15 months of content creation journey है ना. So देखते हैं. But again, having said that, if you have the internet, right, then it's like then the entire world is my audience. उस तरीके से देखा जाए तो है ना. I mean, I just maybe have to speak more in English, less in Hindi maybe for international people. But you know what? I've spoken with a lot of international people also. मतलब इजराइल का, जर्मनी का, यूके का लोग बात किया है मुझसे, लोगों ने DM किया है and all that. But the thing is, मैं उनके मार्केट्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ. So the point is, and मेरा क्या है ना, मेरा रवैया ऐसा है कि like you have seen, right? मतलब I am shit in speaking Hindi, but I love speaking in Hindi because it gives me that kick. ठीक है, टू स्पीक इन हिंदी अच्छा लगता है बोलने में. सो आई जस्ट वोंट स्टॉप मेकिंग वीडियोस इन हिंदी बिकॉज मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट चाहिए. मुझे हिंदी बोलने में अच्छा लगता है, मैं बोलूंगा, सुनना है तो सुनो. जिसको हिंदी नहीं आता है वो हिंदी सीख के सुने मेरा. So my point is like no plans as of such, right? I have no plans of even अभी भी नहीं कि वो group वगैरह and all that, but it's a good idea. I mean, I will consider all those pointers and देखते हैं धीरे धीरे करके. We'll also stay in touch. So आप भी ideas देते रहना, हम करते रहेंगे implement. And would love to have more sectors like the financial workshop is there, na? Like that, if you cover individual sectors, that would also be a huge thing, right? There are so many sectors because that would be a deep dive into a particular sector. Because see bro, ultimately सारे sectors का skeleton समझा दिया. इसके ऊपर वो skeleton है. देखो point वही पे है. Santosh, ultimately see what you have to see is sales growth, and then see in jewelry you will tell volume growth and SSG. In hospitals you will tell occupancy. Same thing only, but only the numbers will be different. मतलब अगर हम सेक्टर का वीडियो बनाएंगे तो हम आपको उल्टा करके फिर देखो, हमें अगर और कोर्स बेच के करोड़ों छापना है तो हम सेक्टर पे सेक्टर बनाएंगे, है ना. करेक्ट. दैट्स नॉट द एम हियर. द एम, देखो पैसा बनाना है मुझे, उसको भी बनानी है प्रेरणा को, मैं वो नहीं बोल रहा. मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम हर सेक्टर का भी बनाने लग गया तो फिर ये वर्कशॉप का क्या मतलब है. करेक्ट. बिकॉज आप ज्वेलरी बेचो, सीमेंट बेचो, कुछ भी बेचो, आप एथलीजियर क्लोथ्स बेचो, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे वही मार्जिन दिखना है, मुझे वही केपेक्स दिखना है. So मतलब whatever you do, you sell a product, you sell a service, it's the same thing. Okay, so I think we can move on to the next caller. Prerna, can you just add a couple of more participants? Yeah, Rajushi, because I think it's already up. Time is up. That's why. Yeah. I think we can wrap it up. We can take 2 more questions, like maybe 7 बजे तक कर लेते हैं. चलो. I added Mukesh Patil. Yeah, hi Mukesh. Good evening. Can you please quickly tell your question? Yeah, hi Rajeshri. Hi Mukesh bhai. हाँ. To hearing you both guys. So my question, I'm little bit straight to forward to question. मेरा question ये है कि when we come to SMEs, तो SMEs में पोजीशन लेने के लिए means how it works I don't know actually, कि अभी उसमें लॉट्स में लेना पड़ता है, तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना मीन्स एक लॉट भी लेना है तो 2 lakhs 4 lakhs like that we have to True. तो how it works means फ्यूचर में जाके वो नॉर्मल NSE में आ जाता है और डिपेंड करता है, वो कंपनी पर डिपेंड करता है ना. ओके. कंपनी अगर अच्छा होगा तो वैसे भी स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ता जाएगा ना, तो वो मेन बोर्ड में आ ही जाएगा. ओके. डिपेंड ऑन दैट. खराब है तो वो एसएमई से गायब भी हो सकता है. हाँ राइट, दैट मोस्ट कंपनीज तो वही होते हैं. हम सिर्फ उनको फोकस करते हैं जो मेन बोर्ड में आते हैं, है ना. मतलब फॉर एवरी गुड स्टॉक देयर आर 10 बैड स्टॉक्स. सो बट एक बात बोलूं, अगर आप एसएमई में भी जा रहे हो तो एसएमई को मतलब डिमोनाइज भी नहीं करना और ग्लोरीफाई भी नहीं करना. वहां पे भी ऐसे कंपनीज को अगर आप ट्रैक करोगे तो आपको अच्छा कंपनी मिलेगा, तो उनके साथ बड़ा होते होते आप मेन बोर्ड में आ जाओगे. फिर लेट से वो कंपनी का फंड रेजिंग होगा, आपका बहुत वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, फिर आप स्टॉक को बेचोगे, बहुत पैसे छापोगे. बट अगेन हैविंग सेड दैट, राइट, इट कम्स डाउन टू ग्रोथ एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है.
और ट्रैकिंग एट द एंड ऑफ द डे. यू कांट बी इग्नोरेंट विथ एनी काइंड ऑफ स्टॉक. एसएमई में प्रॉब्लम होता है कि डिस्क्लोजर का, ठीक है. सो मैं एक ही चीज बताता हूँ कि लाइक यहाँ पे कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि लाइक कुछ बड़े इन्वेस्टर को शायद इनसाइडर मिलता है या उनको नॉलेज में थोड़ा बहुत, बिकॉज ऑफ कोर्स राइट, कंपनीज क्या होता है ना, मतलब अगर उनमें जो इन्वेस्टर है उनके लिए अलग अलग प्रेजेंटेशन बनाता है, उनके लिए अलग अलग वर्कशॉप्स करता है, ठीक है. सो द पॉइंट इज के लाइक ये सारे जगहों में व्हाट कैन यू डू, यू कैन ओनली डू विद व्हाट्स गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. सो मैं बोलता हूँ कि हमारी इंडिया का मेन स्टॉक मार्केट में भी बहुत ऑप्शंस है, बहुत अपॉर्चुनिटी है. तो अगर तुम थोड़ा बहुत यहाँ से बड़ा पैसा बना लो तो फिर उसके बाद एसएमई में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दैट्स अप टू यू ब्रो, है ना. बट देयर इज नो गुड और बैड, ओके, देयर इज नो गुड और बैड. एसएमई का भी बहुत ऐसे स्टॉक्स है जो मैंने देखा है अपनी जिंदगी में 10x 50x होते हुए. सो दैट्स फाइन. ओके, या प्रेरणा एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. I have added Sandeep to the queue, but I don't know if he's here. Okay, just then let's add one thing and उसके I बाद added another one, Arvind. but I can't see it. Kumar Tiwari. Again, both are not available, I guess. Yeah, I think अब नीचे से देखो एक बार, because I think उन्होंने रिक्वेस्ट पहले रेज किया था या something. Okay, okay. The system is also glitching. हाँ, सिस्टम भी बोल रहे हैं बंद करो ये अभी. Added another one. छोड़ दो फिर. I think it's enough. I think हो गया, बहुत हो गया. Let it be. Okay. Okay, हाँ, राजकुमार जी आ गया. राजकुमार जी चलो बताओ आपका सवाल. लास्ट कॉलर आज, बस डन. आप हो सर जी? म्यूट कर लो अपना माइक इफ यू आर ऑन म्यूट. अनम्यूट कर लो, सॉरी. हेलो. हाँ राजकुमार जी, गुड इवनिंग, बोलिए. हाँ, गुड इवनिंग. हाँ बोलिए. Actually, thank God I found you on YouTube. Thank you. Thank you very much. Thank you, आप आए आज. Yeah, I am pretty very much excited for your program. So actually, recently I took fresh entry in Senco due to high P valuation of Kollan. After your workshop, I came to know that means growth is the key. So after that, presently I have 5% loss in Senco, but Kollan come down from 800 to 600, right? So now should I shift to Kollan at this price, or what did you suggest? देखिए, don't like directly put the gun on my head. ऐसे नहीं कर सकते. No. मैं आपको एक एंगल से बता रहा हूँ, ठीक है. देखो, yes. सेनको का ग्रोथ रेट अभी टाइटन का ग्रोथ रेट से कम है. द रीजन भी यही है कि सेनको तो आपको पता है ना, ईस्ट इंडिया कैलकाटा बेस्ड कंपनी. Yes, I am from Calcutta also. हाँ करेक्ट. বাঙালি বোঝাই যাচ্ছে ভয়েস শুনে. তো बट ये हिंदी बोली ताले सबाई बुझते पारबे. सो राइट. हाँ, तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि लाइक सेनको अभी न्यू दिल्ली के साइड में जा रहा है, नॉर्थ के साइड में, इवन छत्तीसगढ़, एमपी, वहां भी थोड़ा करके दुकानें खुल रही है. सो देखो द